Hi guys, good evening. I'm really very sorry. Good evening. Good evening. Good evening. I hope all of you are doing good. And first of all, a big thank you to all of you for being here, and thank you very much for giving such a huge response to this 25 most important question clinical series. I will be taking care of the subject of pathology, and the whole purpose of these series which we are having here is to help all the FMGs around the globe for having a better assessment of their preparation and to understand that it is not only one way in which a question could be there. There can be multiple ways of asking a question and how to deal with it. So I know you people are enjoying. There are certain sessions which are already being done, and you people must have learned a lot. And continuing that trend, I also would want today from my side, I would try rather to give you some insight as to what can happen and what not. Thank you. Thank you all of you. Thank you very much. Yes, Chotu log. So I'll not waste much time. We'll start with the session. Now see, as far as pathology is concerned, as we have discussed multiple times in the classes, that according to NB, the question count is different, but whatever we are covering in the subject, because it is integrated with every subject, rather, I would say. So the amount of questions which we were getting in the past exams were around about 23, 24, like that. Now, pathology, as it is divided into three different halves, journal, systemic, and hemat. So, if you see, only last time there was a little discrimination as to from which topic, but how many questions have come. But generally, they are keeping a equivocal, distribution into the topics from where the questions are coming. So, whether we are talking about a journal path, or we are talking about hematology, or we are talking about the systemic path, the amount of questions which are coming are same. So, many a times you people ask that what is important and what not, what we can leave. So if you ask me, understanding that what has been asked prior, you cannot skip a topic. But yeah, there are certain important topics, and from there I had tried to take up the questions. And if you go on to the previous year recalls, which are there on the YouTube channel of MIST, and even with the MIST All-in-One you people are getting, you have there. If you see, you would be able to understand the important points from where the continuously, they're asking the questions. So I hope that you people have studied well, and I hope, you would keep on studying for the next 30 days. Exactly 1 month is left for the exam. And, we need to pump ourselves up, and we need to be on the right track. ताकि जो मेहनत की है वो ख़त्म नहीं हो जाए. ठीक है? बेटा मेरी बर्थडे नहीं है आज. I don't know that who said that today is my birthday. It is not my birthday. It was, a week ago. But thank you very much for the birthday wishes. Thank you. चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ध्यान से पढ़ना बेटा. देखो, है ना, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. जल्दी आंसर करने के लिए कोई तुमको नोबेल प्राइज नहीं देगा. 55 seconds are there in the exam. You have to read the question carefully. A 73-year-old man brought to the casualty by attendants with complaints of severe headache and dizziness from past few days. The patient also complains of high pressure feeling in head. MRI was performed, and a mass measuring 4 into 4 centimeters was noted attached to the dura mater. HP of the mass shows calcification and tumor cells. True regarding the condition. So we need to find out true statement from the following statements. Neuropil will be seen in between the tumor cell wall. High calcium levels leading to calcification. Multiple layers of calcium will be seen in a whirly fashion in the tumor biopsy, and all of the above. Yes. So already you people, yes, 24 questions from pathology. So you people have given the right answer. Thank you very much. Thank you very much for understanding the question and giving the right answer to it. देखो अब समझना कैसे बेटा. There it is an integrated kind of a question. Two different things have been asked. If you see it once, it's a question which have come from the CNS tumors, or it's a question which have come from
the calcification topic which we generally read in chapter number 1. Okay, so what exactly the examiner is trying to show in this? We understand that whenever we are having calcium deposits seen in the brain tumor, it's a tumor in the brain, so calcium deposit है तो बेटा ये क्या हो गया, meningioma हो गया. ठीक है, the diagnosis is meningioma because calcium deposits are seen with meningioma. Dura matter भी लिखा है यहाँ पे, and meningioma में जो हमारे पास the biopsy finding which we have is a psammoma body. ठीक है, it's a psammoma body. तो psammoma body कैसा होता है बेटा? Psammoma body is multiple layers of calcium, concentric laminated deposit. अब concentric है बेटा, गोल गोल है, so वर्ली वर्ड आ गया यहाँ पे. ठीक है, so they are writing the same thing, but they are writing in a different way. That's it. So the correct answer for this question is C. Now for how does a psammoma body looks like, that I'll show you. That how a psammoma body is looking like. So when I see a psammoma body, as we can say, it's a whirly kind of a thing which we are getting. तो आप ये वाला स्लाइड देखो. अगर आप इस स्लाइड को देखते हो तो बेटा ये दिस इज योर psammoma body. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इट इज कमिंग इन अ whirly fashion. दिस इज अ फाइंडिंग ऑफ meningioma. ये जो चीज है दिस, इफ आई आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, सो आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, व्हाट एग्जैक्टली आर यू सीइंग इन दिस? या यू आर सीइंग दीज रोजेट्स. हाँ, गुलदस्ता टाइप का चीज है ये. दीज रोजेट्स यू आर सीइंग, दीज रोजेट्स. अब दो तरीके के रोजेट्स हैं. एक्चुअली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रोजेट्स, बट यहाँ पे आई एम शोइंग यू 2 काइंड्स ऑफ रोजेट. वन रोजेट इज इन विच द सेंट्रल एरिया अराउंड द ट्यूमर सेल्स इज नॉट एम्प्टी. And the second rosette which I'm showing you here, this is again looking like a rosette, but you are getting a white color over here. This white color means it's an empty area. So whenever there is an empty area, it's a true rosette. Whenever there is no empty area, it's pseudo rosette. ये वाला जो rosette है ना बेटा, this rosette is called as Homer right rosette. And where do you see this Homer right rosette? Homer right rosette you are seeing in the patient of medulloblastoma. किसमें दिखेगा छोटू? मेडुलोब्लास्टोमा. और ये जो है दिस काइंड ऑफ रोजेट, इसको बोलते हैं बेटा फ्लेक्सनर विंटरस्टीनर रोजेट. फ्लेक्सनर विंटरस्टीनर रोजेट. आई एम श्योर योर ऑप्थेल्मोलॉजी सेशन हैज बीन डन, योर क्लासेस हैज बीन डन, एंड इट मस्ट हैव बीन टोल्ड टू यू दैट इट इज सीन इन रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है, एक ये बायोप्सी और है विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. ये तो psammoma बॉडी हो गया बेटा, meningioma में दिखता है. दिस one more finding. इस finding में what are you seeing? You are seeing this pink color deposits ऐसे ना, ये इस तरीके से deposit मिल रहा है ये वाला. So whenever you are getting this kind of a deposit, इनको हम बोलते हैं बेटा rosenthal fibers. What do we call it as? We call these as rosenthal fibers. And these are seen with pilocytic astrocytoma. ठीक है, तो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा के साथ आपको ये रोजेंथल फाइबर्स मिलेंगे. These are the biopsy findings. Just by the biopsy finding, you'd be able to understand कि ट्यूमर क्या पूछा गया है यहाँ पे. मेडुलोब्लास्टोमा जब भी आएगा तो इट्स अ वेरी 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 पैथेटिक काइंड ऑफ अ ट्यूमर, वेरी बैड प्रोग्नोसिस, ग्रेड 4 WHO है. ठीक है, ये बच्चों में है पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा वेरी कॉमनली, एंड मेडुलोब्लास्टोमा आल्सो इन kids. ठीक है, एक और चीज है बेटा, बिकॉज दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन ब्रेन ट्यूमर, सो दे माइट आस्क यू वन मोर थिंग. एक अपना होता है बेटा पेरीवैस्कुलर रोजेट. व्हाट इज पेरीवैस्कुलर रोजेट? पेरीवैस्कुलर रोजेट मतलब वेसल्स के चारों तरफ. सो जो आपके ट्यूमर सेल्स है ना, द ट्यूमर सेल्स विच यू हैव लाइक दिस. अभी यहां पे देखो आप, यू सी हियर between the tumor cells you have this pink color deposit. This pink color deposit which you are having between the tumor cell is called as neuropil. ठीक है, यहां पे क्या होगा, बिटवीन द ट्यूमर सेल्स यू आर नॉट हैविंग अ पिंक कलर डिपॉजिट, यू आर एक्चुअली हैविंग अ वेसल. तो अगर बीच में वेसल है एंड अराउंड द वेसल यू आर हैविंग द ट्यूमर डिपॉजिट, यू कॉल्ड एज अ पेरीवैस्कुलर रोजेट. एंड ये जो पेरीवैस्कुलर रोजेट है छोटू, दिस इज सीन विद ग्लायोब्लास्टोमा. ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड. ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. नाउ विल मूव ऑन टू सम क्विक फायर सिंगल लाइनर्स. ठीक है, या क्या बात है यार, वेरी गुड.
नाउ चलो ये बताओ, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फाइंडिंग ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी. अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फाइंडिंग ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी मतलब सेल डेथ. व्हाट वुड यू सी एंड यू वुड से कि भाई पक्का 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 दिस सेल इज डेड, अभी कोई वापस नहीं आ रहा है इससे सेल. अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फाइंडिंग. यस यू आर राइट. अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फाइंडिंग के लिए बिल्कुल यू आर हैविंग अमॉर्फस फ्लॉक्यूलेंट densities. Very good, very good, very good Rohit, Ruturaj. Nice. Second question बताओ, stain for apoptosis. What do you? Yes. बिल्कुल हाँ. एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और. Whenever we are talking about ultra structural, no, ये ultra structural अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे लेके जाते हैं. If they are asking about microscopic finding, not the electron microscope, but a light microscopy finding, तो ये मत कर देना कद्दू. Do not write amorphous flocculent densities there. Then you have to write the findings which you can see on a light microscope, maybe a cytoplasmic finding or a nuclear finding. तो generally वहाँ पे pycnosis या फिर cariolysis उस तरीके की चीज दी हुई होगी. But ultrastructural, whenever they are asking amorphous flocculent density, you will mark. Stain for apoptosis बताओ. Very good बेटा, very good, very very good छोटू राम. It is an Xn5. बट एक चीज ध्यान रखना छोटू, बताना मेरे को यहाँ पे मार्कर क्या है. What is for marker of apoptosis? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ. अच्छा अगले क्वेश्चन का भी आंसर कर रहे हो, क्या बात है भाई साहब, वेरी गुड. मार्कर बताओ, मार्कर फटाफट. ठीक है समीर, दिस इज ऑल्सो या नहीं हॉलमार्क ठीक है. मैं आई एम आस्किंग अबाउट दिस छोटू राम, नॉट दिस मार्कर ऑफ एपोप्टोसिस. बताओ. यस मार्क, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. इट इज CD95. इसको और क्या बोलते हैं, फास, है ना. सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट मार्कर देन इट इज CD95, अदरवाइज इट इज Xn5. हॉलमार्क आप लोगों ने ऑलरेडी इसका आंसर किया हुआ है. So I'll not take much of your time. This is your goblet cell. ठीक है? This is goblet. So whenever in a esophageal biopsy you are finding a goblet cell, always go with Barrett's esophagus. वो उसका hallmark feature है. Because goblet cell is seen, more commonly in the intestinal area. So, in the esophagus we are not having goblet cell in a normal person. Now when I take a biopsy of a person and I'm getting a goblet cell there, तो ऐसा होता है कि यार यहाँ से कुछ यहाँ आ गया. So it is also that your Barrett's esophagus is also called as intestinal metaplasia. इसको और क्या बोलते हैं बेटा, intestinal metaplasia. Okay? चलो most potent bactericidal free radical बताओ. Tell me, most potent bactericidal free radical. Yes. देखो बेटा, फ्री रेडिकल्स, देयर आर मल्टीपल फ्री रेडिकल्स वी हैव, राइट. बट बैक्टीरियोसाइडल की जब हम बात करते हैं, सो द बेस्ट फ्री रेडिकल वुड बी, यस वेरी गुड बेटा, OCl नेगेटिव हाइपोक्लोराइट. दिस इज द बेस्ट सिस्टम टू किल. जो होता है ना अपना MPO हैलाइड सिस्टम जो है, दैट इज द बेस्ट सिस्टम टू किल अ पैथोजन which is coming in the oxygen dependent pathway which we have done in the chapter of inflammation. Golden brown pigment बताओ. बताओ फटाफट छोटू लोग, फटाफट बताओ. गोल्डन ब्राउन पिगमेंट. यस नहीं सद्दाम, OH नहीं है, हाइपोक्लोराइट है ना. इट इज नॉट हाइड्रोक्सिल आयन. बैक्टीरियोसाइडल पूछा छोटू, तो वो हाइड्रोक्सिल नहीं है, हाइपोक्लोराइट. यस पेरीन्यूक्लियर पिगमेंट लाइपोफ्यूशन. वेरी गुड. पेरीन्यूक्लियर पिगमेंट इज लाइपोफ्यूशन. वेरी वेरी गुड. इसके साथ बेटा ये वियर एंड टियर पिगमेंट है. दिस व्हेनेवर अ क्वेश्चन ऑन लाइपोफ्यूशन पिगमेंट विल कम, दो चीजें होंगी. वन, ओल्ड एज होगा ही होगा, ठीक है. जनरली दे गिव यू एन ओल्ड एज ऑफ अ पर्सन, और जनरली नॉट मैंडेटरीली बट जनरली हार्ट डिजीज की, ठीक है, दिल के अंदर तीर लगा हुआ होगा बेटा, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होती है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है. तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ सकता है. ऑल राइट, सो दिस इज द वन लाइनर विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड. चलो आगे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आंसर करना.
A 16-year-old girl comes to the OPD with history of recurrent fever, malaise and weight loss, and anorexia also. On physical examination, cervical lymphadenopathy was noted. Biopsy was taken from the lymph node, and upon microscopic examination, group of dead cells surrounded with inflammatory infiltrate were noted. ठीक है, कुछ cells मरे हुए, चारों तरफ inflammatory infiltrate है. Zn stain positivity is also noted. When I stained it with Zn, Zealensin, it came positive. These findings are consistent with A. Councilman bodies including the apoptosis, caseating granuloma indicating TB, non-immune granuloma indicating sarcoidosis, or Langerhans giant cell. ये Langerhans giant cell. तो आंसर बताओ. क्या बात है छोटू लोग, वेरी गुड. त्रिवेदी, अजय, एलन, सिद्धार्थ, स्मृति, सिमरन, प्रकृति, अनुभव, एवरीवन, वेरी गुड. यू अंडरस्टूड. देखो छोटू, क्या क्या आपने को पकड़ना है यहाँ पे. सबसे पहली बात, ग्रुप ऑफ डेड सेल्स सराउंडेड विद इंफ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट. ग्रुप ऑफ डेड सेल्स मतलब नेक्रोसिस, सराउंडेड विद इंफ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट मतलब ग्रैनुलोमा का शेप आ रहा है यहाँ पे. ठीक है. देन Zn स्टेन पॉजिटिविटी मतलब यार टीबी है भाई, माइकोबैक्टीरियम टीबी. तो टीबी हो गया. तो यार छोटू, टीबी में कौन सा ग्रैनुलोमा मिलता है? केजिएटिंग ग्रैनुलोमा इंडिकेटिंग टीबी. दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल. हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर. चलो, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रीमॉडलिंग, बताओ फटाफट. व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रीमॉडलिंग. Yes, Wasim, you are right. Non-caseating or the naked granulomas are seen in sarcoidosis. उसमें बेटा inflammatory infiltrate नहीं होता. जो lymphocyte का कॉलर नॉर्मली ग्रैनुलोमा पे होता है वो नहीं मिलता है. So you are absolutely right. वहां पे लिखा है वहां पे लिखा हुआ है कि inflammatory infiltrate है. So enzyme required for remodeling. आंसर बताओ. शुभम, दांत मत दिखा इतने सारे. आंसर बता फटाफट. तेरा वेट कर रहा हूं शुभम मैं आंसर का. Yes, it is MMP9. Very good. मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेज. ठीक है, कौन सा मेटल है छोटू यहाँ पे? Zn. और रीमॉडलिंग क्या बताया था अपन ने? व्हाट वी स्टडी रीमॉडलिंग में, व्हेन यू आर मिक्सिंग अप थिंग्स टू मेक अ ग्रैनुलेशन टिश्यू अ लिटिल स्ट्रॉन्गर. ठीक है. रेज्ड स्कार बट विद इन द वुंड बाउंड्री. रेज्ड स्कार विद इन द वुंड बाउंड्री. बताओ फटाफट इसका क्या आंसर होगा? बाउंड्री के अंदर है बट रेज्ड है, सो दैट मीन्स इट्स एन एक्सेसिव रिपेयर. एक्सेसिव रिपेयर में अपन ने दो ही चीजें पढ़ी हैं यार. या तो अपन किलॉइड हो सकता है या हाइपरट्रॉफिक स्कार हो सकता है. इट कैन बी प्राउड फ्लैश ऑल्सो, बट मेजरली क्वेश्चंस कम फ्रॉम हाइपरट्रॉफिक एंड किलॉइड. तो क्या होगा उसमें? वेरी गुड गाइस, इट्स अ हाइपरट्रॉफिक स्कार. अच्छा, हाइपरट्रॉफिक स्कार बेटा इट इज हैविंग नो जेनेटिक प्रिडिलेक्शन. नो जेनेटिक प्रिडिलेक्शन. ठीक है. देन सेकेंड, इसका कोई मोस्ट कॉमन साइट नहीं होता. देयर इज नो मोस्ट कॉमन साइट फॉर दिस. बट हाँ, ये अपने आप क्या कर सकता है? दिस कैन रिग्रेस इटसेल्फ. नाइस, इट कैन रिग्रेस. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट अ किलॉइड, किलॉइड के अंदर यस, किलॉइड में मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है बेटा? स्टर्नम. और ये नहीं दिया हुआ हो तो ईयरलोब्स. एंड ये अपने आप रिग्रेस नहीं करता. किलॉइड नेवर रिग्रेसेस. सो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन हाइपरट्रॉफिक एंड किलॉइड. और किलॉइड में ना, किलॉइड विल ऑलवेज बी आउटसाइड वुंड बाउंड्री. ये रेस तो होगा बट इट विल गो बियॉन्ड द वुंड बाउंड्रीज ऑल्सो. ओके, चलो बेस्ट. अच्छा, अगला भी देना शुरू कर दिया. वेरी गुड. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन इन मॉलिक्यूल C3b. लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स से आई एम आस्किंग यू बेटा ओवरऑल बताओ, ओवरऑल बेस्ट. जल्दी से टेल मी what is the overall best? Yes, if we are talking about an overall opsonin molecule, then you already know it is your antibody IgG, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा होता है. ठीक है. So IgG is overall best, but अगर complement system से they are asking you the best
opsonine molecule, then it has to be C3b. चलो, then चिड़ियाक हिगैशी बताओ छोटू फटाफट. चिड़ियाक हिगैशी के लिए what is the gene defect we are talking about here? Tell me quickly. फटाफट. बेटा C5a, when we are talking about C5a, it's a chemoattractant. A आ रहा है ना उसमें, तो आजा हो जाएगा वो. It's a chemoattractant. We are talking about a opsonin, that is why C3b is the answer. यहाँ चिड़ियाक हिगैशी में बताओ, what would be it? अरे वाह छोटू, very good. चिड़ियाक हिगैशी, very good बेटा. This is gonna be list. Yes, Paras, Anshuman, Saddam, Vijesh, Shweta, yeah, very good. Sameer, Meenal, a lot of you are asking. Thank you very much for taking part and answering like this. List gene, ठीक है? इसमें दो चीजें याद रखनी है. Whenever we are talking about a चिड़ियाक हिगैशी, देखो बेटा, एक तो list gene है. Then this is, you know, albinism will always be there in the child, and there will be history of recurrent infections. क्यों recurrent infection हो रहे हैं? Because Chidiac Higashi syndrome, no, this Chidiac Higashi syndrome, it is a defect in engulfment. So when the WBC is not able to engulf the pathogen properly, will the WBC able to kill the pathogen? जब engulf ही नहीं कर पा रहे हो भाई, तो killing कहाँ से होगी? जब killing नहीं होगी तो infection होता रहेगा बार बार. So recurrent infection will always be there. Okay? अच्छा, फटाफट बता दो छोटू. Macrophage of placenta, very good बेटा. This is your Hofpire cells. Very good. अच्छा, अब ये जो प्लेसेंटा का तो हो गया, लिवर का बताना. टेल मी अबाउट द लिवर. लिवर का क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है. अब ये ऐसा फुद्दू सा क्वेश्चन लगता है ना, ऐसे कि यार इतना इजी क्वेश्चन कहां से आएगा यार. हु वुड आस्क मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर? बट दे आस्क्ड एंड दे गिव यू ऑल द ऑप्शंस. यस, यू आर राइट, इट इज योर कफर सेल्स. नाइस. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं छोटू. थर्ड क्वेश्चन. A 60-year-old diabetic female who is a known case of chronic kidney disease and is on hemodialysis since last 8 years. Renal biopsy demonstrate a pinkish hyaline material deposited within the glomerulus, which is giving salmon pink color on light microscopy. True amongst the following regarding the condition is: first, most commonly used stain is HNE. Second, deposition of beta macroglobulin type of amyloid in kidney will be seen. Third, prolonged hemodialysis can lead to development of clear cell RCC commonly, and diameter of amyloid is 7.5 to 10 nanometers. आ जाओ, बताओ. Okay, nice. So Shrivasini, Siddhant, Rahul, Anubhav, Dev, Sheel, Hriday, Saddam, Mayank, Hits, Rupinder. Very good बेटा, very good. अब मेरे को एक बात बताओ, आप में से किस किस के पास पानी की बोतल है बेटा? उसमें ढक्कन में ना पानी ले लो. अभी कुछ करेंगे थोड़ी देर में अपन. आ जाओ, अब आ जाओ. यस, केतवी विचारे. वेरी गुड. द ओनली आंसर विच इज करेक्ट इन दिस इज डी. या इट्स बेटा, इट्स अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन. सिंपल हो जाता छोटू. आई एम हैप्पी अबाउट वन थिंग, दैट यू अंडरस्टूड दैट इट्स अ क्वेश्चन विच इज ऑन अमाइलॉइडोसिस. तो इस चीज के लिए आई विल गिव यू full points that at least you are understanding. तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि यार सैल्मन पिंक कलर आ रहा है, पिंकिश हाईलाइन मटेरियल है, एंड व्हाई यू आर गिविंग बी एज एन आंसर? बिकॉज यू नो कि यार कुछ तो बीटा बीटा बताया था, यू नो, किडनी के अंदर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोमेरुलस. बट क्या आपको याद है, यू ऑल आर गिविंग द आंसर एज बीटा मैक्रोग्लोबुलिन. मैक्रो होता है वहां पे बेटा, इट इज ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड, नॉट मैक्रो. ओके, तो ये गलत है. यहां पे छोटू राम
ये ढंग से पढ़ना होता है, इसको बोलते हैं क्या, आप सब जानते हो, यू पीपल नो दैट इट्स बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, बट आपने फटाफट पढ़ा ना क्योंकि जल्दी आंसर करना है, बीटा मैक्रोग्लोबुलिन यही आंसर है। फिर बाहर निकल के कैसा मन करता है, कोई बताता है अरे नहीं यार एक की जगह आई था, तो फिर हो जाता है अरे यार 2 क्वेश्चन पेपर आए थे भाई, मेरे में तो आई था पक्का, तेरे में ए आया होगा, मैं तो श्योर हूं आई। फिर एक नई न्यूज आएगी कि अब तो ऑप्शंस भी अलग अलग आने लग गए हैं। ऐसा नहीं होता छोटू, ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट कॉमन स्टेन इज HNE, नो इट्स कॉन्गोरॉइड, दिस इज रॉन्ग, इट्स नॉट बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, इट इज माइक्रोग्लोबुलिन बीटा 2, ये भी गलत है। Prolonged hemodialysis can lead to development of clear cell cancer, no, prolonged hemodialysis leads to development of papillary renal cell carcinoma commonly. Which is the renal cell carcinoma which is most commonly attached with hemodialysis? It is always your papillary more commonly than clear. तो ये भी गलत हो गया। The only correct answer छोटू राम is 7.2 to 7.5 to 10 nanometers is the diameter. So correct answer is D. आया मजा? Yes, very good. ये भारी मिस्टेक है भाई। अब आप बताओ, you try to tell this that if let's say you are making this kind of a mistake in the exam, you have worked so hard, man, so hard, that you have learned a topic like amyloidosis. You know the integrities of that topic. You must have learned all the amyloids seen at different places. But just because you are not reading it properly, you are making a mistake. And then it is, we blame things. So ध्यान रखना है छोटू, है ना। चलो आ जाओ, बताओ ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, इट इज फॉर व्हाट? इट इज योर किडनी। ATTR, यार मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं यार, आई एम नॉट डूइंग एनी चीटिंग, तुम चीटिंग कर रहे हो। चलो, नहीं सिद्धार्थ, रोना नहीं है, रोना नहीं है भाई। चलो फटाफट बताओ बेटा, ATTR किसके लिए है? यस यू आर राइट, इट इज सीन विद कार्डियक अमाइलोइडोसिस, ठीक है। देन AL टाइप, AL टाइप हाँ फैप के साथ भी दिख सकता है ATTR, यू आर राइट। चलो AL किसके साथ दिखेगा छोटू? Yes, again you people are right. It is seen with multiple myeloma. It is primary amyloidosis. Whenever a question on multiple myeloma, that is a plasma cell disorder or primary amyloidosis, they are asking AL. AA किसके साथ होता है? What is AA with? Yes, very good. Ram Narayan, Shivasini, Jayesh, Dr. Shyam, Ekta, Madhumita. Yeah, you people are right. So AA, it is seen with secondary amyloidosis beta, or it will be seen with FMF, familial Mediterranean fever। A बीटा अपन ने कैसे याद किया था? A बीटा बताओ, A बीटा बताओ फटाफट। यस, चलो A बीटा इज फॉर एल्जाइमर्स डिजीज, एंड A कैल, बेटा ये कैल क्या है? कैल्सिटोनिन, एंड फॉर कैल्सिटोनिन वी ऑल नो इट इज योर मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड विल ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड? विच सेल्स? Please let me know, because a question has come in your exam where they have asked, they have given you a thyroid biopsy and they have said that, this is a thyroid follicle. We all know thyroid follicle is lined by the follicular cells, and between the two follicles of thyroid follicles, of thyroid, which cells do we have? Parafollicular cells, which are elongated cells. So your follicular cells, जो follicle बना रहे हैं, they are secreting T3, T4, and your parafollicular cells, छोटू, parafollicular, they are secreting what? They are secreting your calcitonin. चलो आगे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, a 23-year-old stuntman, अब देखो ध्यान से आंसर करना है तुमको, जल्दी आंसर करने का कोई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने को बेटा, अपने को रिवॉर्ड कब मिलेगा? when we'll get the reward? when in our exam anything which is
150 plus. That's the reward of our hard work which we are doing from last 5-6 months. So आप उसके लिए बेटा एक एक क्वेश्चन ठीक करना है आपको. Every question will make you reach towards the goal. तो जल्दी नहीं करनी है, ध्यान से करना है. A 23-year-old stuntman got injured during performing stunt. His forearm got massive burns which needs grafting for repair. A graft has been taken from his thighs and placed at the burn site on forearm. Third day, during post-op, the graft site started showing signs of rejection. Comment on the type of graft and mechanism of the rejection. Okay, so the answers which I am getting, they are A and B. चलो पहले मुझे ये बताओ that how many types of graft rejection do we have? We have 3 kinds of graft rejection, beta. Graft rejection are of 3 types. Hyperacute, acute and chronic. These are the 3 types. Hyperacute में छोटू it is minutes to hours, right? Chronic के अंदर what we discussed, it is months. And how many months? More than equal to 6 months. 6 या 6 महीने से ज़्यादा. And acute is from days, 2 months. And how many months we are talking about? Less than 6 months we talked about, right? ये किया था ना, अभी आ गया ना, अभी तुम आंसर चेंज कर रहे हो. You are changing the answers. पहले क्यों गलती करी थी? बेटा आप acute की बात कर रहे हो. And in acute अपन ने क्या डिसाइड किया था बेटा? हाइपर एक्यूट के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड फॉर हाइपर एक्यूट वाज टाइप 2, हाइपर सेंसिटिविटी फॉर क्रॉनिक वाज टाइप 4 एंड हाइपर सेंसिटिविटी फॉर एक्यूट वाज 2 मोर देन 4. सो ये द ग्राफ्ट इज गेटिंग रिजेक्टेड ऑन थर्ड डे. थर्ड डे मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्यूट रिजेक्शन. एंड फॉर एन एक्यूट रिजेक्शन छोटू, द मोर कॉमनर hypersensitivity which is leading to it is type 2. And what is type 2 hypersensitivity, Chotu? Type 2 hypersensitivity is cytotoxic, where you are killing the cell. What is the what is the mechanism for this cell killing? Antibodies. So the body, the host, this person has a preformed antibody made against the graft which is killing the graft. That is why an acute rejection occurs. So what should be the right answer for this? It is not T cell mediated, bache. The right answer for this question is preformed antibody. C. छोटू हाइपर एक्यूट तो मिनट्स टू आवर्स में चला जाता ना. अपन एक्यूट की बात कर रहे हैं. एक्यूट के अंदर भी डेज टू मंथ्स होते हैं एंड देन इट इज मोर कॉमनली टाइप 2. दैट्स इट. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, चलो बताओ. इन द सेम पर्सन, अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इजी काइंड ऑफ अ थिंग कि यार ये तो मतलब क्या है, बट हमेशा आ जाता है छोटू ये एग्जाम में. तो जब ये आएगा एग्जाम में तो गलत आंसर मार्क मत करना, हवा में नहीं उड़ने का है वहां पे. सो सेम पर्सन का बताओ क्या होता है. व्हाट इज विथ सेम पर्सन? कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके. दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर. सैड नहीं होना अपने को. वी डोंट हैव टू बी सैड. अपने को क्या समझना है कि अपन जब क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, वी नीड to apply everything we know because every question is very important, right? Yes, it is auto. Same species. Yes, you are right. Allo. Different species. नहीं आदिल, अभी रुक जाए यार, अभी पानी के ढक्कन का अभी थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है? अभी यहां पे आओ. चलो. Different species, it is xeno. And between the twins, this we know it's iso. ठीक है? Mnemonic for type 3 hypersensitivity. बेटा type 3 hypersensitivity का mnemonic बहुत ही simple है, sharp. आप सबको पता होगा, it's a very popular mnemonic. Is being coming from many years. ठीक है? Yes.
So it's been coming from many years. So देखो S is, देखो type 3 hypersensitivity is immune complex mediated disease. Generally, all the kinds of glomerulonephritis more commonly are type 3 hypersensitivity. I'm not saying that they would only be a type 3 hypersensitivity, but generally they are more commonly type 3 as compared to type 2 or type 4. So S is your SLE, systemic lupus erythematosus, and serum sickness, a recent exam question. H, henox-squalene purpura, Arthus reaction, reactive arthritis, and this is PSGN, post-streptococcal glomerulonephritis. So these are the examples of type 3 hypersensitivity. Many a times in your exam, the question comes so simple कि यार ये, you know, which type of hypersensitivity it is. ये question आ जाता है exam में. Then mnemonic for type 2 hypersensitivity. ये अपना बहुत ही, you know, अपन ने इसमें दो चीजें याद की थी. That mnemonic for type 2 hypersensitivity, my blood group is RH positive. This is my blood group is RH positive. ठीक है, अब इसमें देखो my से क्या है, myasthenia gravis. B से blood transfusion. And I told you, याद रखना एग्जाम में, anything which is a hypersensitivity and it is related to blood, it's gonna be your type 2 hypersensitivity. Then G से क्या था बेटा, good pastures and Graves disease. I से क्या है, immune hemolytic anemia, immune thrombocytopenic purpura, blood related. Then RH disease of newborn, again blood related problem है. And positive से बेटा pernicious anemia, very important. Pernicious anemia is which kind of hypersensitivity? Type 2. Pemphigus vulgaris also is type 2. So learn these mnemonics, okay? And remember, anything related to blood, more commonly it is type 2 hypersensitivity always, okay? Marker for NK cell, very good Mayur, very good. Yes, CD16 and 56. So NK cell मैंने आपको बताया था बेटा सोलो डोलो काम करता है, वायरस एंड ट्यूमर के अगेंस्ट है ये. दिस इज अगेंस्ट वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल, और ये मार देता है उनको. तो ये ना बेटा ये सीरियल किलर है. अब तक 56 नाना पाटेकर की मूवी आई थी ना, वहां से आप याद कर सकते हो. हालांकि but still I am telling you that the better marker for this NK cell, if you have to choose one from this, you would always choose CD16, okay, for NK cells. चलो आगे चलते हैं. डिसोसिएशन, ध्यान से आंसर करना, ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं. डिसोसिएशन ऑफ E2F from the RB gene during phosphorylation of the RB gene will have which of the following effect on the cell cycle? Number 1, inhibition of cell cycle inhibition of cell cycle at G1 phase, inhibition of cell cycle at G2 phase. The cell cycle will progress and the cell will divide, or there will be no effect on the cell cycle as E2F and RB gene phosphorylation is not associated with cell division. आ जाओ. तो अच्छी बात है ना बेटा, आगे तो बढ़ना ही है ना. If you have passed the FMG, then you obviously have to move forward and do your PG. और मैं तो बोलता हूँ PG भी पास करने के बाद छोड़ना नहीं, पढ़ाई करना है, सुपर स्पेशलाइजेशन करना. चलो आ जाओ. Okay, nice. Alan, Anubhav, Ketki, you people have given the Paras, Meenakshi, Ajay, Akib, you all have given the right answers. बेटा dissociation देखो, cell cycle कैसे होता है छोटू? G0 resting phase, G0 के बाद G1, फिर अपना S आता है, then G2, and then we have M. This is how the cell cycle is. And we have discussed this in the classes that when we are talking about the cell cycle, it is directly under the control of RB gene, and that is why RB gene is called as governor of cell cycle, because it governs. And which phase of the cell cycle actually RB gene is governing? This is your G1S phase. How? RB gene normally, standing like this. And RB gene is always holding up to a molecule called as E2F. It's a transcription factor. ये आप ऐसे समझ सकते हो that it is a translator. ये बताएगा that what signal has come. But RB gene always and always holds up. Now when you give phosphate to the RB gene,
कहाँ से आते हैं ये फॉस्फेट? फ्रॉम द साइक्लिन्स. सो व्हेन द फॉस्फेट इज गिवन टू द आरबी जीन क्या करता है? आरबी जीन E2F को छोड़ देता है एंड किसको पकड़ता है बेटा? फॉस्फेट को. ठीक, तो जैसे ही आप फॉस्फेट देंगे, एट दैट टाइम E2F विल कम at this G1S, and once an E2F comes at G1S, the cell starts dividing because now you understand the signal. So this is what has been asked, that dissociation of E2F, मतलब RB gene से अगर E2F अलग हो जाए, when does it happen? When the RB gene is getting phosphorylated. When the RB gene is getting phosphorylated, what effect it will have? The cell will start dividing and the cell cycle will continue. So what is the correct answer? बेटा inhibition तो होना ही नहीं है, और ये D option is also wrong. इसका ही तो सारा मतलब है. This is the whole sole thing responsible for any kind of cell division. So what is the correct answer for this question? The correct answer for this question is C. ठीक है छोटू? बेटा P53 also first phase G1S, majorly G1S. Because यहाँ पे synthesis हो रही है ना, so any kind of abnormality we do not want to get it synthesized only. Because in this first phase you are having synthesis, here you are having division. So अगर बनेगा ही नहीं, अगर आप यहीं रोक देते हो, if anything abnormal is there and you stop it here, so you will not have to take care of this phase. So whether it's RB or P53, better thing they regulate G1S. Okay. Raj, हमारी वजह से नहीं है यार. It is not because of us. It is because of your hard work that you have cleared the exam, and I really want to, give you congratulations that you have cracked the exam. चलो, surest sign of malignancy. Surest sign of malignancy, छोटू लोग, गलती नहीं करना. इस क्वेश्चन में गलती नहीं करना. Surest sign of malignancy में, ठीक है, बहुत ध्यान से. Yes. छोटू मीन्स वॉट? छोटू मीन्स जो लोग छोटे होते हैं एज में, जैसे आप छोटे हो मेरे से एज में, सो दैट इज वाई आई कॉल छोटू. कोई बात नहीं यार, इट्स ओके. अब देख रोहित, तूने लिखा मेटाप्लेजिया. ऐसा नहीं है दैट यू डोंट नो द आंसर, बट जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया ये. बेटा इट इज मेटास्टेसिस. ठीक है, लेकिन अगर कोई हॉलमार्क पूछता है, इफ समबडी इज आस्किंग यू हॉलमार्क, देन इट बिकम्स व्हाट? एनाप्लेजिया. व्हाट इज एनाप्लेजिया? एबनॉर्मल ग्रोथ. ठीक है, सो श्योरेस्ट साइन इज मेटास्टेसिस एंड हॉलमार्क इज एनाप्लेजिया. साइक्लिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर G1S, जो फर्स्ट फेज है, उसके लिए कौन सा साइक्लिन लगता है आपको सेल साइकिल में? इन द सेल साइकिल, एज वी नो दैट वी हैव टू फेजेस वेयर द साइक्लिन्स आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रोलिफरेशन और टू कॉज द डिविजन. सो देयर आर 4 साइक्लिन्स. कौन कौन से साइक्लिन्स हैं छोटू? D, E, A एंड B. और अपने को पता है दैट D and E दे आर विद G1S and A and B they are with G2M. And we have discussed already that if you have to choose one, then D you will choose for G1S and B you will choose for G2M as a better answer if everything is given. ठीक है, so यहाँ पे क्या पूछा है? G1S. So either D or E. This will be the answer. Very good, beta. Very good. Now move forward. Least radiosensitive, least radio-resistant phase of cell cycle. Least radio-resistant. So that means that they are asking about most radio-sensitive. And कैसे याद किया था बेटा? Sensitive वाले में S नहीं आएगा. So what is the answer for this question? The answer for this question is G2M. Thank you very much. Yes, धोनी एक अच्छा बैट्समैन है. जिमी जयपुर जैक्सन. Nice. धोनी एक अच्छा, yeah, 4-6 2-1. हेमंत गुजर, you are right. And least, very good बेटा. Most radio sensitive tissue. रेडियो सेंसिटिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं, सो इट इज ऑलवेज गोना बी आवर बोन मैरो. वेरी सेंसिटिव. एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज अ नर्वस टिश्यू. और ये तो आप सबको पता है ये वाला क्वेश्चन. एबनॉर्मल टिश्यू एट अ नॉर्मल लोकेशन. तो अपन ने कैसे याद किया था? जैसा भी है हमारा है यार, इट्स एन एबनॉर्मल टिश्यू बट इट्स अ नॉर्मल लोकेशन. सो आंसर क्या होगा?
Very good, very good, very good. It's hematoma. चलो आगे चलते हैं. Pattern of inheritance when disease gets transferred from grandmother. ध्यान से, हाँ छोटू, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ. सिद्धांत, रोहित, ललित, नीलेश, मधुमिता, आकाश, शिवानी, स्मृति, everyone, each one of you. Nice. Thank you for answering. Pattern of inheritance when disease gets transmitted from grandmother to her son and daughter, and then disease son only transfers to his daughter while disease daughter transfers to both son and daughter. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 जनरेशन की बात कर ली बेटा. ध्यान से आंसर करेंगे इसको. Disease is getting transmitted from grandmother to son and daughter both. Now this diseased son is only giving the disease to daughter, whereas the diseased daughter is giving disease to both son and daughter. बताओ. Chill life, normal tissue and abnormal location, this is your choriostoma. Very good, guys, very good. I'm so proud of you people. Thank you very much for answering. It's X-linked dominant. देखो यार, whenever we are talking about the pedigree, we are going to solve the pedigrees also, but you have to understand that you need to see whether there is a gender bias or not. Whether we are saying कि ये सिर्फ पापा से मम्मी, मतलब मम्मी जो है वो इसको दे रही है या पापा सिर्फ इसको दे रहे हैं. If something of that sort is there, then it might be X-linked. Because autosomal में क्या होता है? There is no gender bias. And if we are saying that, you know, grandmother or grandparents wala generation mein the disease was, and after that the disease didn't come, and then again in the grandchildren the disease is, then it means the skipping ho gayi hai. The generation has been skipped. Then it becomes recessive. Here there was no gender skip, there was a gender bias, and there was no generation skipping. So whenever there is a gender bias and there is a no generation skipping, then it is X-linked dominant. चलो आगे चलते हैं. बताओ छोटू. Tell me. Yeah, you people are right. Tell me this pedigree. There are 4 options which have been given: autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, and X-linked recessive. So first you have to understand only the Mendelian pattern is given. Mendelian pattern ही दिया हुआ है खाली, तो नॉन मेंडेलियन के बारे में सोचना नहीं है. Whenever we are solving a Mendelian pattern, we have to know 2 things. First thing is, you have to decide between dominant and recessive first. And how do you decide between the dominant and recessive? By seeing whether there is a generation skip or not. So in the first generation we have, okay, now these 1 and 2 are parents. Their children are 2, 3, 4 and 2, 3 and 5 in this generation, and the disease has come. So mother was diseased. She has given to her son and her daughter. Then son has given the disease, okay, to daughter and son both. And then mother has given the disease further. So what is it? Absolutely right. Thank you very much. I'm so proud, beta. This is autosomal dominant because there is no gender bias here. Father, who is having an X chromosome, is also transmitting the disease to son. So if it would have been a gender bias, then father would have only given to daughter. But father ने दोनों को दे दिया बेटा, तो ये gender bias नहीं है यहाँ पे. So obviously it's an autosomal dominant. All the generations involved, no gender bias, autosomal dominant. ठीक है? बेटा AR नहीं होगा, ऋतुराज. It will not be AR. Why it will be AR? Recessive तो आप तब बोलोगे ना when there is a generation skip. कहाँ पे generation skipping हो रही है? There is no generation skipping happening here, so it is not AR. आगे चलते हैं. 7th question. A 27-year-old female complains of trouble with her vision. Physical examination reveals a very tall, thin female with long and thin fingers. Examining her eyes reveals the lens of her left eye to be in the anterior chamber. तो क्या यार छोटू ये tall है, पहली बात. Thin है, long and thin fingers. Eye के अंदर anterior chamber में lens गया हुआ है. Her blood reveals methionine and cystathionine within normal limits. Family history is also there. So family history is positive for these kind of clinical features. All are true regarding the condition except
ठीक है, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, आ जाओ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दिस कंडीशन। पहले तो ये बताओ मेरे को, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड एज, ये डायग्नोसिस क्या है इसका? वेरी गुड पारस, वाओ पारस, आई एम सो हैप्पी, इट्स मार्फन सिंड्रोम, नाइस, इट्स मार्फन सिंड्रोम फॉर यू। एंड मार्फन में छोटू, मार्फन में मार्फन ही निमोनिक है ना, मार्फन का निमोनिक क्या है? मार्फन का निमोनिक ही मार्फन है। ऐसे क्या क्या है? एम, इट्स अ मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, तो इफ इट्स अ मिट्रल वॉल प्रोलैप्स देन दैट्स द मोस्ट कॉमन कार्डियक एनोमली। मोस्ट कॉमन का ये जो ए है, दिस इज योर aortic dissection, this is the most common cause of death. R, retinal detachment. F, fibrillin gene involvement. कौन सा fibrillin है बेटा? FBN1. A से एरेक्नोडेक्टाइली एंड N से बहुत टॉल हाइट होती है उनकी, तो अपन देख लेते हैं अभी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज aortic dissection in these patients. ठीक है, आपको निकालना क्या है? ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग द कंडीशन एक्सेप्ट, सो यू नीड टू फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। चलो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन aortic dissection, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। Primarily dominant pattern of inheritance is seen, yes, because Marfan syndrome is most common autosomal dominant disorder we have, so dominant pattern of inheritance is there. Involvement of chromosome number 15, yes, this fibrillin gene is on chromosome number 15, but beta ये FBN1 gene होता है, 2 नहीं होता, it is not FBN2, it's FBN1. So what is the correct answer? C. And many of you have given the right answer. I was seeing that, and thank you very much for picking up this question, because sometimes, you know, वो शुरू में आपने क्या किया था, in the second question only you made this mistake quickly going through the question and making the answer wrong, but now you didn't, so thumbs up to you. चलो, अब ये वाला बताओ फटाफट, tell me this pedigree. Yes Madhumita, you are right. Babu, you are right. Nilofer, yeah. Chalo. So tell me, what is this? I'm waiting for your answers. Is it autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked recessive, or Y-linked? Nice. Okay, Hitesh, I've seen your answer. You are saying it to be autosomal recessive. Somebody has said status gallery. You have said Y-linked. Rahul, again AR. Okay, so it is between B and Y. So generally people are saying either it is the autosomal recessive or a Y-linked. देखो, अब इसमें ध्यान रखना है छोटू. Many of you are saying it's Y-linked. ठीक है, लेकिन ये Y-linked कैसे होगा? Y-linked में father is transferring the disease, right? So only males will be affected in that. Okay, I understood that. पर छोटू यहाँ पे फादर कहाँ अफेक्टेड है यार? Only male got a disease, understood. But is the father affected? Did this father send the disease further? No. So whenever you are saying Y-linked, you have to see the transmission of disease from male to male. यहाँ पे all the males are affected in this pedigree, that's okay. But it is not male to male transmission which it is showing. Only male transmission in the pedigree. ऐसा नहीं है. So ऐसे जल्दी से देख के कि okay, males are affected and it's a Y-linked, ऐसे नहीं करना है. You have to see whether I am having any male to male transmission, depicting here. तो वो तो नहीं है. So what is it? ये Y-linked नहीं है छोटू. This is not Y-linked. It's wrong. X-linked recessive ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमको पता नहीं है. मतलब autosomal dominant ये हो नहीं सकता, because we don't know that what kind of but we have a skipping of generation in this. जैसे यहाँ पे this father is diseased, but the father is not sending the disease further. So ये dominant pattern तो ये है ही नहीं. Now we are coming with autosomal recessive or X-linked recessive. Now if it would have been an autosomal recessive problem, तो यार फिर खाली मेल यही affected क्यों होते? Why this? You know what is it? This actually is an X-linked recessive, where the mother was a carrier for a disease. Her one X was mutated, and whenever that mutated X come to a male child, the child got diseased.
And because the mutation on X which a child has, it's a weaker mutation, so this person is not able to make the further generation diseased. So the correct answer for this question is X-linked recessive. Okay? Yes. Yes, this is X-linked recessive. मैं दोबारा से एक बार समझाता हूँ बेटा. I'll tell you once more. देखो, whenever you are talking about a pedigree analysis, there are two things you have to think about. One, you have to see whether it is, you see the generations, how many generations are given. Like in this, there are 4 generations which are given. And you have to see whether I'm seeing a skipping of generation, yes or no. So yes, you are seeing a skipping of generation, like, from this second to third, there is no disease which have come. So this is a skipping of generation which you are seeing in this. And second, you have to see whether there is a gender bias or not. That only one specific thing is getting affected. So यहाँ पे आप देखो, only males are getting affected. Only males. If it would have been an autosomal problem, male-female में ratio equal रहता है यार. So females will also should be affected. तो वो नहीं है. Why you became confused? If I would have not given the Y-linked as an answer, your answer might have been different. But I have placed Y-linked here because once you see only male getting affected, the first thing that comes to your mind कि ये Y-linked हो गया. But Y-linked में बेटा at least father को disease तो होनी चाहिए थी ना यहाँ पे. Then the father is only giving to father, then it would have been understood. But यहाँ तो father को disease नहीं है. But still the male got affected. That means why? It's not a Y-linked disease. Why the person, the male is getting affected? Because the mother is a carrier for the disease. And mother has given the mutated X to the male. And that is why the male is diseased. Okay. So whenever a male in an X-linked recessive condition is getting the mutated X chromosome, the male is showing the disease because male only has one X chromosome and whenever it will be mutated, पंगा हो जाएगा या disease हो जाएगी. तो correct answer क्या है? XLR. Okay. चलो. Now, question number 8. Which statement regarding the given karyotype is true? I'll zoom this karyotype for you. This is the karyotype you can see. So, as you can understand by looking at the karyotype, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब ठीक चल रहा है. X में भी ठीक है यार, डबल X है. तो ये हो गए 46 भाई यहाँ तक. 23 का पेयर हो गया ये. बट ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे. सो व्हाट इज इट? 1 एक्स्ट्रा. ट्राइसोमी हो गई है. और कहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है? ऑन X. सो दिस इज योर 47XXY. 47XXY. तो ये क्या हो गया अपना? क्लेनफिल्टर सिंड्रोम. अब अपने को देखना है बेटा ट्रू स्टेटमेंट. आ जाओ, बताओ ABCD. अल्ताफ. अल्ताफ, इट इज नॉट टर्नर छोटू. टर्नर में बेटा XO होगा. You will have only one sex chromosome and that is on X. No Y, no other X. ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना यार. 2 + 1 हो गया ना, 3 हो गए. तो 47XXY है. Yes, you are right. तो क्लेनफिल्टर हो गया. अब इसका आंसर बताओ मेरे को फटाफट. मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल, आपको ट्रू स्टेटमेंट, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट. इट इज द मोस्ट कॉमनली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है ये. Tetralogy of Fallot is the most common cardiac anomaly. Occurs due to mutation in the FMR gene present on chromosome number 15, or advanced paternal age is a risk factor. Yes, Hema, all in one, Shubhangi, Asad, Rahul, Kirtiraj Singh Chauhan, Babu, Vikas, no. Beta, it's not an autosomal problem, man. This is Klinefelter's. This is a problem on the sex chromosome. So it's not an autosomal disease. So everything is wrong. It's a sex chromosome disorder. Tetralogy of the Fallot is most common and cardiac anomaly? No. Mitral valve prolapses. Occurs due to mutation of FMR gene? No. Advanced paternal age? Yes. Advanced paternal and advanced maternal age is a risk factor for Klinefelter syndrome. तो यहाँ paternal नहीं, parental लिखा है मैंने. So what is the correct answer for this question? The correct answer for this question is D. Okay? Very good. Very good. चलो आगे चलो. This is the final pedigree. इसको फटाफट आंसर कर दो. दोबारा से वही देखना बेटा. First you have to always see the options. Only Mendelian is given. तो नॉन मेंडेलियन का सोचना ही चाहिए अपने को. अब बताओ. Depending upon the options you will see. सबसे पहले क्या देखना है? Dominant recessive. So see, first generation, second generation,
third generation. Okay. Are we seeing any skipping? Yes, Babu, dono. Babu Chaudhary. So it is both maternal and paternal, both age advancement is. कोई बात नहीं बेटा, गलत आंसर से घबराना नहीं है. यहां पे एग्जाम थोड़ी दे रहे हो आप, सीखने आए हो ना यार. अगर ये सब आता होता तो, और नॉलेज को टेस्ट वेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. 1 महीना यार एग्जाम में, अभी हो जाएगा. आ जाओ. ओके, तो चलो अपन देखते हैं. सो यू आर सेइंग, देखो एक चीज तो आप लोगों ने सबने, यू पीपल हैव डन वन थिंग राइट, दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि भाई ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव नहीं है. सो बिकॉज देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां भी चली गई, सो देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, तो रिसेसिव वाला अपन कट कर देंगे. अब नाउ यू हैव टू सी अ जेंडर बायस, दैट इज देयर एनी जेंडर बायस. यहां पे फीमेल है छोटू, फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, तो शी कैन ऑब्वियसली इन अ डोमिनेंट सिनेरियो शी कैन मेक अ फीमेल एंड अ मेल बोथ डिजीज्ड. सो ये फीमेल डिजीज है, इसने मेल एंड फीमेल बोथ को डिजीज कर दिया. बहुत अच्छे. सो इसका मतलब ये डोमिनेंट पैटर्न था और ये एक्स लिंक्ड हो सकता है. मेल इज हैविंग अ म्यूटेशन हियर, दैट इज व्हाई इट इज डिजीज, नो, बट मेल ओनली गिविंग टू डॉटर्स. यस, if it's a X-linked disease, male can only give to daughter. Why? Because male transfers Y to the son and X to only daughters. इसके X पे problem है. What is the answer for this question, Chotu? The answer for this question becomes X-linked dominant. चलो बेटा, ये this is one of the pedigrees where you people have given, all of you. I didn't see any wrong answer till now, and I really am happy. So I would like to clap for you people. Thank you very much for giving the right answer for a pedigree. I hope now your concepts are clear. चलो आगे आ जाओ. 9. Parents brought their 18-month-old child to the pediatric OPD with complaints of delayed response. On physical examination, protrusion of tongue, flat facial profile, upward slanting of eyes, and delayed milestones are noted. All are true except regarding this condition. So सब सही है, गलत क्या है ये ढूंढना है इन पेरेंट्स के बच्चों में, इस बच्चे में जो पेरेंट्स लेके आए हैं. चलो. Nice. Karyotyping can be used to confirm the genetic anomaly. Okay. Risk of blood cancer is associated with this genetic abnormality. On echocardiography, mitral wall abnormality can be noted. Growth will be delayed, but no mental retardation will be seen in this child. So you need to find out the false statement. All are true, which is false. This is what we have to find. Thank you, Akshay. Thank you, Madhumita. Yes, Babu Chaudhary, you are absolutely right. This is a case of Down syndrome. And Down, Ketki, Ajay, Nilofer, Miss Target, Alan. Okay, so you people are getting confused. You people have, some of you have given the right answer, some of you have not. The confusion is between B and D. So I'm okay and I'm happy कि चलो कम से कम A और C में तो confusion नहीं है. ये तो तुम श्योर हो कि ये सही है. अब 2 में से देख लेते हैं. बेटा डाउन सिंड्रोम है ना, ये तुमने मेरे को बताया ये डाउन सिंड्रोम है. छोटू, Down syndrome is associated with ALL and AML both. Most common overall leukemia in a Down syndrome is ALL. And if a child is less than 3-year-old, then it is AML. तो risk of blood cancer तो होता ही है ना यार Down syndrome के साथ. ALL, AML नहीं होता है क्या? So all are true except for one thing. The last one. Growth will be delayed but no mental retardation. नहीं भाई, Down syndrome is the most common genetic cause of mental retardation. It's one of the most common genetic cause of mental retardation. Second most common cause of mental retardation is Fragile X. Genetic cause, but ये Downs है. Yes. G. Yes, Harshal. Dr. J.S., Farhan, Hema, Gaurav, Mayur.
राइट रोहित, यू पीपल आर राइट। अब देखो क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डाउन सिंड्रोम, नो बेटा, ट्राइसोमी 21 है, आपको पता है। डाउन सिंड्रोम में सारे फीचर्स से आप समझ ही गए थे, ऑल द फीचर्स आई हैव गिवन। लेकिन इसमें मोंगोलॉइड स्लांट होती है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, मैक्रोग्लोसिया होता है इस पेशेंट को, यू नो प्रोट्रूड ये eyes, slanting eyes inside, and this glabella is very thick in these patients. And you have to remember about, we have discussed this in the classes also, simian crease, a single line in the hand, and we have discussed that there will be gap between the first and second toe. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Sandal gap. This is called as sandal gap. Mitral valve prolapse is a very common cardiac anomaly seen with Down syndrome. All the patients of Down syndrome more than age of 40 years suffers from Alzheimer's disease. ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया। Yes, mitral valve prolapse तो मिलता है बेटा। endocardial cushion defect, ECD, this is the most common cardiac anomaly. ये नहीं मिलेगा then VSD, वो VSD नहीं मिलेगा then ASD, but ECD is the most common cardiac anomaly. ठीक है। सेकंड, ये जब भी हम इसकी बात करें, ऐसे अगर कोई बच्चा आ रहा है, सो दिस इज एडवर्ड। एडवर्ड में क्या है? ट्राइसोमी 18। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक तो मैंने आपको बताया था, इसमें ना जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है, ये ऑक्सीपिटल रीजन इज आउट एंड द चिन इज मूविंग इनसाइड। तो ऐसा ना ये कोन जैसा बन जाता है, दिस ये इस तरीके से कोन जैसा हो जाता है ये, बिकॉज ऑक्सीपिटल रीजन इज बाहर है, चिन अंदर हो गई। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा स्ट्रॉबेरी स्कल। व्हाट वी कॉल इट एज स्ट्रॉबेरी स्कल। Then we had discussed that they will be having clenched fists with overlapping fingers. So if they are saying clenched fist, overlapping fingers with strawberry skull, it is Edwards syndrome. और बेटा ये लास्ट, सबको पता ही होता है, पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13। इसमें क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो बच्चे को ना बेटा ये दिखना ही दिखना है। Then they also have clenched fist, overlapping fingers, but P for Patau and P for polydactyly. Polydactyly can also be seen with Edward, but very commonly associated with Patau syndrome. तो ये polydactyly मिलेगी आपको। And in the patients of Patau syndrome, as I had explained you in the class with an example, that everything will be small. सब छोटा बेटा, microphthalmia, microganthia, सब, ठीक है? So everything is smaller in these patients. ठीक है? Yes. रॉकर बॉटम फिट तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो अगले पेज पे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी छोटू लोग, फटाफट। अ मेल सफरिंग फ्रॉम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर marries a diseased female also suffers from, which is also suffering from autosomal dominant. So two autosomal dominant disorder people, they got married. Percentage of children suffering from diseases. Yes रोहित, सब कुछ स्मॉल होगा। Two autosomal dominant people, male also is suffering from autosomal dominant disease and female is also suffering from autosomal dominant disease. What is the percentage of children suffering from the disease? ठीक है, बहुत ही simple question है। And you are right, Basit Altaf, you are right. बेटा no, सोच के बेटा, सोच के करना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है बच्चे। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर whenever we are talking about autosomal dominant, you only can have heterozygous genotype which can show a disease. Because autosomal dominant mutations, if they are homozygous, अगर दोनों एलेल के ऊपर म्यूटेशन आ गए बेटा, तो पेशेंट मतलब बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। fetus does not survive. There are abortions which are there because there is a death in utero will happen. If both are suffering from autosomal dominant disorder, that means they are heterozygous. And if they are heterozygous, तो बेटा एक तो ये हो गया, इसमें क्या हो गया बेटा, दिस बिकम्स होमोजाइगस फॉर म्यूटेशन, तो ये तो जिंदा ही नहीं रहेगा, दिस विल गेट अबॉर्टेड। देन सेकंड, व्हाट विल बी सेकंड? सेकंड इज दिस, सो ये क्या हुआ? दिस। थर्ड क्या है बेटा? अगेन दिस इज दिस। एंड व्हाट इज फोर्थ वन? फोर्थ वन इज ENE। तो छोटू लोग, ये वाला बच्चा क्या है? ये प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल की है। हाउ मच इज द डिजीज प्रोबेबिलिटी यू आर हैविंग? 50%। समझे? यस लवकेश कुमार। रोहित यू आर राइट नाउ। तो छोटू ए आंसर क्यों कर रहे थे? वाई यू आर गिविंग ए आंसर? आपको लगा अले
दोनों दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये तो पंगा हो गया, सारे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता छोटू। वन विल डाई, ये तो डेथ इन यूट्रस है, ये नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी भी है, एंड ओनली 50% रिस्क चांसेस आर देयर। सो क्या आंसर है इसका? 50%। चलो, एंजल मैन सिंड्रोम। बेटा एंजल मैन सिंड्रोम जो है दैट इज अ ड्यू टू डिलीशन ऑफ विच जीन ऑन विच क्रोमोसोम। सो एंजल मैन, यस एनजे, कद्दूगिरी हो गई है, ठीक है आदिल, समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था डी, मेंटल रिटार्डेशन तो होता ही है। चलो ये बताओ, एंजल मैन सिंड्रोम बताओ। एंजल मैन सिंड्रोम यस, एंजल हैप्पी, डिलीशन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक तो ये मम्मी की वजह से हो रहा है, विच जीन, विच जीन, तो बेटा ए से ए याद किया था, UBE3A, और विच क्रोमोसोम, 15 नंबर क्रोमोसोम। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। बेटा आपको ना, मतलब आई डोंट नो हाउ हैप्पी यू, हाउ आर यू फीलिंग, आई हैव नो आइडिया दैट how you people are feeling after giving the answers, but then for us as faculties, when we sit here and see all this, this is not that you just have revised, or this is not that the answers are given somewhere, you're answering it. Imagine yourself just a few months back, क्या था, आपने को पता ही नहीं था ये क्या होता है, ये जीन वीन क्या है, ये क्या एंजल मैन, ये प्रैडरविली, ये सब होता क्या है, लेकिन आपने को अब पता है यार। सो थम्स अप। SNP gene deletion leads to, yes, ये एंजल मैन सिंड्रोम वाले हैप्पी पपेट्स हैं, मम्मी वाले हैं ना बेटा, स्माइल करते रहते हैं। SNP gene, yes, SNP gene leads to Prader-Willi. This is your Prader-Willi. ये पैटर्नल है, P for Prader-Willi, P for पैटर्नल। चलो नाइस, आगे बताओ। डिजीज फादर नेवर transmits. Even a father is diseased, but the father is not transmitting. Only diseased mother is transmitting the disease. What is this pattern? कौन transmit कर रहा है? Only diseased mother transmitting the disease. Then what is it? What is it? ठीक है। Yes, Basit, Jatin, Paras, Alan, Twinkle Pradhan, Ginny, Hemant, you all are right. This is your mitochondrial. This is your mitochondrial or maternal inheritance. ठीक है छोटू? And the most common maternal or mitochondrial inheritance disease is Mills. कैसे याद किया था अपन ने? मम्मी को, हमारी मम्मी बेटा, अभी भी अगर आप मम्मी पापा के पास बैठे हो ना, वो जैसे 1 घंटा हो गया सेशन में ना, तो अगर आप बाहर निकल के नहीं गए होंगे तो मम्मी को ऑलरेडी टेंशन हो रही होगी। हो सकता है आपकी मम्मी आपसे आके पूछ भी गई हो, अरे तू इतना आंसर वांसर कर रहा है, इतनी देर से इतना लगा हुआ है, कुछ दूध ला के दें, चाय ला के दें, कुछ खाने के लिए लेगा बेटा। सो मम्मी को तो एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है ना बेटा, कि तुमने पेट भरा है तुम्हारा कि नहीं। मील्स, मिलास, दिस इज द मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिजीज। FMR जीन, very good beta, very good. Abhishek Bhagat, you are right. This is your Fragile X syndrome. Amazing. Yes, it's a Fragile X syndrome. Which codon? Now please tell me the name of the codon. बताओ फटाफट, कोडॉन का नाम बताओ बेटा। FMR जीन ठीक है, FMR जीन इज गुड, FMR जीन इज गुड। यस रोहित, यू आर राइट रोहित। रुपिंदर, very good guys. So this is your CGG. Nice. CGG repeat. Yes Simran, Altaf, Nigar Ansari, Hridoy. Yeah, nice.
चलो अब मेरे को बताओ टाइप ऑफ क्रोमोसोम. टेल मी विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज इट. फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो. विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज इट. Oh yeah. Yes, knowledge medicos, you are right that you need to have more than 200 repeats of this CGG codon, then only the patient will be suffering from Fragile X syndrome. Otherwise, it's a pre-mutated state. But अभी अपन इसके नहीं, इसकी बात करें बेटा. Which type of chromosome is it? Okay, so साजल, मयूर, हृदय, अच्छा सबके अलग अलग आ रहे छोटू. वेरी गुड. अच्छा बहुत सारे लोग क्या बोले, टीलोसेंट्रिक. Some are saying acrocentric. Okay, so we are having metacentric also. बेटा मैंने बोला था ना वो पानी की बोतल होगी, उसमें तुमने ढक्कन निकाला होगा, उसमें डालो पानी डालो अभी अभी पीने के लिए. अरे छोटू राम, this is your telomere. Telomere is sitting at the top. Whenever telomere is sitting at the top, एक साइड में है ना यार ये, तो ये क्या है, टीलो है ना भाई. टीलोसेंट्रिक टॉप पे बैठा है ना सेंट्रोमियर. 4 तरीके के होते हैं बेटा. यू हैव मेटासेंट्रिक व्हेन इट इज एट द सेंटर. यू हैव सब मेटासेंट्रिक व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. यू हैव एक्रोसेंट्रिक व्हेन इट इज टुवर्ड्स वन साइड एट द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पेरिफेरी. एंड व्हेन इट इज एट द पेरिफेरी और एट द टॉप इट इज टीलोसेंट्रिक. तो ये टीलो है छोटू, ये मेटा वेटा नहीं है. ये ऐसे मत सोचो कि क्रोमोसोम ऐसे मुड़ गया है. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, टीलो एट पेरिफेरी, एब्सोल्युटली. चलो आ जाओ. A 16-year-old female came to the medicine OPD with complaints of generalized weakness and irritability. She is pale and gives a history of heavy menstrual bleed. On CBC, her hemoglobin is 8.7 grams per deciliter and MCV is 63 femtoliters. True regarding the above condition is option A, increase osmotic fragility but normal size of RBC. Increase osmotic fragility but decrease size of the RBC, normal osmotic fragility but decrease in the size of the RBC, and decrease osmotic fragility but increase in the size of RBC. चलो आओ. Yes. Jatin, you are right. Twinkle, you are right. Alan, you are right. Yes. बेटा ये क्या केस है? In this case, I'm so happy that you people have identified what it is. देखो, 16-year-old female है, high menstrual bleed है, very heavy menstrual bleed. So obviously she is anemic. तो hemoglobin 8.7 हो गया, and the MCV is 63 femtoliters. 63 femtoliters. Normal MCV कितना होता है? 80 to 100. तो ये कम हो गया. So that means what kind of RBCs I'm going to get? Microcytic. And whenever I'm talking about a microcytic RBC, the mnemonic which comes for the anemias are CETAL. Sideroblastic, iron deficiency, thalassemia, anemia of chronic disease and lead poison. और यहाँ पे most common क्या होगा? Most common is iron deficiency. Osmotic fragility changes in thalassemia. It changes in hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis में the osmotic fragility is very high because RBC becomes very fragile. Thalassemia में ऐसा नहीं होता. But this is the case of iron deficiency anemia more commonly. Is there any change in the RBC osmotic fragility in iron deficiency anemia? No. And when your MCV is slow, that means you have decrease in the size of RBC. तो अगर समझ में नहीं भी आ रहा था तो बेटा A और D तो हो नहीं सकता था. Because here we are having either a normal size or an increase in size. That is not possible. Then we are only having decrease in size. Decrease in size में बेटा ये IDA का केस है. The correct answer would be normal osmotic fragility but decrease in the size of the RBC. Yes. Nice. चलो बेटा ये this is very 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 important for the exam. ठीक है. Every now and then you get the questions from this particular table and you have to learn this table properly. बहुत ही simple है. There are multiple questions which you keep asking. Right now also you people keep asking about these levels. There are 2-3 things which you have to understand in this. When we are talking about an iron profile in an iron deficiency anemia,
ठीक है, when in the iron deficiency anemia we are talking about iron profile, so it is your iron, ferritin, the stored iron content of the body, TIBC, and transferrin saturation. What is TIBC? Transfer iron binding capacity, and transferrin saturation matlab how much iron is sitting over the transferrin. These are the four things which we are seeing. Now in these four things which we are seeing, in an iron deficiency anemia, as we have learnt, because it's an iron deficiency anemia, so anything related to iron will be less. तो बेटा देखो ये दोनों चीजें तो automatically कम ही हो जाएंगी. The iron and the total iron, the stored iron. TIBC, capacity of transferrin. When you do not have the iron in the body, the transferrin will have more empty areas. No iron is going and sitting over it. So the capacity of iron to go and bind with the transferrin, that capacity of transferrin to go and bind with the iron becomes more because there are more empty sites. So ये बढ़ जाता है. And if let's say there are no iron molecules which are sitting on the transferrin molecule, obviously the saturation, the filled area over the transferrin becomes less. So in iron deficiency anemia, how we have learnt it, everything decreases except TIBC. TIBC को छोड़ के in iron deficiency anemia में सब कम हो जाता है. ठीक है, and we know that our ferritin and our TIBC they are inversely proportional. जितना ज्यादा ferritin होगा उतना ही capacity कम होगी, जितना कम ferritin होगा उतना ही ज्यादा capacity ज्यादा होगी. ठीक है, in anemia of chronic disease, again things are same as iron deficiency anemia barring two things, ferritin and TIBC. Anemia of chronic disease में होता क्या है? In the anemia of chronic disease, yes, देखो ये अपन ने in the classes we have done about this iron mechanism, the absorption of the iron. तो अपन whatever iron we are taking from the diet is ferric iron. Now when ferric iron comes near, what is the first site of iron absorption in the body? That is your duodenum. So whenever the iron comes near to the duodenum, this is the ferric form which you are taking from the diet. Ferric form is a transport form and a storage form. It is not an absorption form. So now duodenum wants this iron, but it cannot come. So first it has to convert into ferrous. Who is going to convert it? But it is getting converted by ferric reductase or cytochrome B. So when you are converting it into ferrous, now this ferrous can go into the duodenum. But what is the molecule required? It will go with a car. What is the molecule? Dimetallo or dicovalent metallotransporter 1, DMT1. You took the ferrous inside. Whatever is required for storage, that will be converted back into Fe3+, because storage form kya hai chotu? Storage form is Fe3+. So you will be converting back this into Fe3+ by the help of which molecule? Apoferritin. Exam question hai ye. Apoferritin se hota hai. And the rest, extra, Fe2+, it comes back into the blood. अब ये blood में आ गया बेटा. ये Fe2+ blood में कैसे आएगा? Who is taking it? By the molecule ferroportin. Port कर रहे हो ना आप? You are porting Fe2 from the duodenum into the blood. So ferroportin यहाँ लेके आ गया. Now this Fe2+ absorption form तो है. अब आपको कहाँ पहुंचाना है this Fe2+? You want to take this Fe2+ to the bone marrow for blood production, RBC production. So बेटा इसको जाना पड़ेगा ना. It has to get transported. Can Fe2+ transport? नहीं. Which is the form which transports? Fe3+. So again you convert it back into Fe3+ with the help of which molecule? Hephaestin, secreted by liver or ceruloplasmin. And then this Fe3+ is given to the transferrin. Transferrin is again a protein which is being secreted by the liver for transfer of iron inside the blood. So ये बैठ जाएगा बेटा Fe3+ transferrin पे जाके, and then it goes into the macrophages of the bone marrow, and then whenever you require erythropoiesis, this iron will be secreted. तो ऐसे आप आयरन का एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में. अब सिचुएशन क्या है कि इन द अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज द लिवर गेट्स एक्टिवेटेड, एंड व्हाट इज द इंटरल्यूकिन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज? which interleukin is more important? The interleukin which is more important is interleukin 6. Recent exam question. Interleukin 6 gets secreted in anemia of chronic disease, in a chronic inflammatory problem, and that interleukin 6 is gonna activate the liver. और बेटा liver क्या बनाता है? Liver बनाता है Thor hammer. What is this Thor hammer? Hepcidin. ये hepcidin क्या molecule है? This hepcidin is gonna block the ferroportin. Once you are blocking the ferroportin, chotu, the iron absorption into the duodenum is okay, but from the duodenum you are not having iron coming into the blood. When you do not have iron coming into the blood, will you be having any iron for transport? No. If you do not have any iron for transport,
Do you have any requirement of transferrin? No. Who is secreting transferrin? Liver. तो बेटा होता क्या है in anemia of chronic disease that due to activation of liver secreting hepcidin, you block the ferroportin and there is decrease in the secretion of transferrin. So when the transferrin decreases, so everything related to transferrin in anemia of chronic disease, whether it is capacity, whether it is saturation, everything related to this will decrease. Obviously, you are not having iron in the blood, so total iron content of the body is less. But is there any problem in storage of iron to the storage site? नहीं. Absorption में problem नहीं है, transport में issue है. So बेटा overall ये बढ़ जाएगा. So generally the question which comes over iron deficiency anemia or anemia of chronic disease, एक तो बेटा यही है interleukin, तो interleukin 6 is important. ठीक है? What is liver secreting in anemia of chronic disease? Hepcidin. ये आपने अभी लिखा है ना? To block the ferroportin. And generally the question comes on TIBC. तो उसके लिए we have done a mnemonic TIBC, very simple. TIBC, it is top in IDA, yes, and bottom in chronic disease. So chronic disease में bottom हो जाता है and top हो जाता है IDA में. ये अपन ने क्लास में लिखा हुआ है multiple times. ठीक है? So this is your anemia of chronic diseases and IDA differentiation. Sideroblastic anemia is exactly opposite of IDA. Because in sideroblastic anemia, what is happening? We are having excess iron of the body. We have excess iron, but we are not able to do what? Erythropoiesis. Why? Because we are not having protoporphyrin, we will not be able to make heme. तो hemoglobin ही नहीं बनेगा, erythropoiesis नहीं होगी. So it is quite opposite. Iron is more, ferritin is more, saturation is more, but capacity is less. This is just sideroblastic anemia. Remember, Pappenheimer bodies in the blood, sideroblast में बेटा these sideroblasts, ring sideroblast in the bone marrow. High iron content, but still the patient is anemic because you're not able to utilize the iron. और iron के साथ, whenever we are talking about iron, the stain is pearl stain or Persian blue. ठीक है? The stain is pearl stain or Persian blue stain. Remember this. चलो. वेरी गुड बेटा, आगे चलते हैं. नाउ ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को. हीमोग्लोबिन 7.2 ग्राम पर डेसिलीटर, एमसीवी इज 70 फेम्टोलीटर्स, आरबीसी इज 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर्स. व्हाट इज योर डायग्नोसिस? व्हाट इज योर डायग्नोसिस छोटू लोग? प्लीज टेल मी. आ जाओ फटाफट. ऑल इन वन इन एवरीथिंग यू आर सेइंग आईडीए. देखो अनीमिया तो है, चलो ठीक है भाई. हीमोग्लोबिन इज लेस, तो अनीमिया तो बोलना ही पड़ेगा. बिकॉज एमसीवी इज 70 फेम्टोलीटर्स, सो ऑब्वियसली इट्स अ माइक्रोसिटिक अनीमिया. बट यहाँ पे आरबीसी काउंट भी दिया हुआ है छोटू. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ माइक्रोसिटिक अनीमिया, मैंने आपको बताया दैट यू हैव टू थिंक अबाउट शीतल. यू हैव टू थिंक अबाउट शीतल, राइट? सो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है. ठीक है? whenever we are talking about this microcytic anemia is ना, तो iron deficiency anemia is the most common anemia which we generally answer. But ये जो anemia of chronic disease है, इसको आंसर करने के लिए you will have any history of a chronic disease. वो नहीं है. lead poisoning में anemia comes late, उससे पहले और symptoms आ जाते हैं. So generally we are differentiating between I and T. Yes, Altaf, you are right. Altaf, you are right. This is not IDA, this is thalassemia. Beta, this is a question of Menzer index. मैंने आपको हमेशा क्या बताया बेटा? Menzer index is your MCV upon RBC. आपकी MCV कितना है? Around 70. RBC कितना है बेटा? 5.8. तो लगभग if you see here, क्या हुआ था Menzer index में? Menzer index में I told you that if it is more than 13, then the answer is IDA. But if it is less than 13, then the answer is thalassemia minor or thalassemia trait. So यहाँ पे अगर आप differentiation करते हो, so you know 70 by 5.8 लगभग I think 11 के आसपास कुछ आना चाहिए approximately. So less than 13 हो गया ना छोटू? So always see the RBC count. खाली MCV देख के आंसर नहीं करना है.
how do you catch these questions? You have to see the RBC count. Because जितना कम RBC count होगा, more lesser the RBC count, higher will be the value. So if the RBC count is going low, and your MCV is also going low, then there are more chances that this is an IDA. But if the RBC count, beta normally 4 to 5.5 or to till 6 तक ही रहती है, RBC count तो 5.8 आ रही है यहाँ पे, तो बनने में प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, and the MCV is low. So when the RBC count is high, obviously the overall value will be low, and it's a case of thalassemia. तो ये आंसर क्या होगा? Thalassemia. Okay. Now, beta, I do not know the page number, Madhumita, in the workbook, but where I have taught you iron deficiency anemia in the workbook, there we have done it. Now, supravital staining is done for? Yes, Gaurav Suthar, supravital staining, you are right, it is done for reticulocyte. And in a supravital stain, why it is different? अच्छा याद दिलाया यार तूने. Jimmy Jaipur Jackson, पानी का अच्छा याद दिलाया. Thank you very much. नहीं. Okay, Shinchan. Hi, छोटे. ठीक है, हेमा ने बताया पेज नंबर 122 पे. रेटिकुलोसाइट बेटा सुप्रावाइटल स्टेन नाम क्या है इसका? दिस सुप्रावाइटल स्टेनिंग, दिस इज डन फॉर रेटिकुलोसाइट. देयर इज नो अल्कोहल इन दिस, सो देयर नो फिक्सेशन, बिकॉज आपको मैचुरेशन साइकिल देखनी है, सो दैट इज व्हाई यू यूज दिस. एंड देयर आर टू स्टेन्स, न्यू मिथाइलिन ब्लू एंड ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू. ठीक है, सो देयर आर दीज टू स्टेन्स हियर. चलो आगे आ जाओ. 35-year-old came to the OPD with complaints of fatigue, weakness and tingling sensation in the hands. He consumes only vegetarian food. He is on vegetarian diet, a weight loss spree, and is on a strict diet. On complete blood count, hemoglobin is 9 grams per deciliter. MCV is more than 136 femtoliters. MCH is more than 40 picogram. Out of the following given images, what is the association with the given condition? ऐसे कैसे स्टेरॉइड बोल दो यार, अभी कहीं स्टेरॉइड का कुछ है नहीं ना, जब आएगा टाइम तो बोलूंगा स्टेरॉइड भी. वेरी गुड अंकुश राजावत, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है बेटा, देख जिमी जयपुर जैक्सन, मोस्ट कॉमन मैक्रोसिटिक अनीमिया इन इंडिया, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस. अगर वहाँ पे विटामिन B12 दिया हुआ है और अल्कोहल नहीं दिया हुआ है तो देन विटामिन B12 विल बी द आंसर. बट अगर अल्कोहल दिया हुआ है तो अल्कोहल, क्योंकि अपने देश में बहुत कंजम्पशन होता है अल्कोहल का, तो अल्कोहल बिकम्स अ वेरी कॉमनर कॉज, इवन मोर देन विटामिन B12 फॉर मैक्रोसिटिक अनीमिया इन आवर कंट्री. चलो आ जाओ. इट्स अ मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, यस, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑल ऑफ यू. इट्स ए हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. ये बेटा टारगेट सेल है, सी इज अ टारगेट सेल. ये कहाँ दिखती है? थैलेसीमिया सिकल सेल में दिखेगी. दिस इज अ पेंसिल सेल. This would be seen in iron deficiency anemia. ये अपनी टीयर ड्रॉप सेल है, डैक्रोसाइट. तो बेटा ये प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस. ठीक है, चलो ये बताओ बेटा, विच काइंड ऑफ आरबीसी यू आर सीइंग देयर? बताओ जल्दी से, विच काइंड ऑफ आरबीसी इज दिस? कैसी आरबीसी है ये? बेटा स्मृति, दिस इज नॉट बेसोफिलिक स्टिपलिंग नहीं था वो, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल वाज देयर. यस एलन, यू आर राइट, इट्स अ स्फीरोसाइट. सो इफ यू आर गेटिंग अ स्फीरोसाइट, it is seen in where? Where do you see this spherocyte? Where do you see spherocyte? Yes, गोल गोल है बिल्कुल, स्फीरोसाइट दिख रहा है बेटा. सेंट्रल 1/3 पैलर इज नॉट देयर, राउंड सेल, सेंट्रल 1/3 पैलर इज नॉट देयर, स्फीरोसाइट. यू आर राइट, इट इज सीन इन HS and it can be seen in IHA, immune hemolytic anemia. How do you differentiate HS and IHA? HS and IHA बेटा देखो, HS में तो it's a dominant disorder, autosomal dominant. It is autosomal recessive also, but it's a genetic disorder. Whereas IHA is a hypersensitivity disorder, autoimmune disorder है ये. So ठीक है, this is how do you differentiate? नहीं बेटा, खाली HS में नहीं है, it is IHA also. So test to differentiate, yes, very good,
it's your Coombs test. अच्छा कार्टून, ठीक है, मैं तेरे को छोटू नहीं बोलूंगा, कार्टून, मैं तो बहुत सारे लोग हैं ना. Yes, it's a Coombs test. If the Coombs test is positive, then it is IHA, and if the Coombs test is negative, then it is HS. आगे बताओ, most common deficient protein in hereditary spherocytosis. Most common deficient protein in hereditary hyper. Yes, most common पूछा है, तो this is your N-chiron. अल्ताफ, most common पूछा है, and most severe form अगर पूछेंगे आप, then it is due to spectrum. Yes, ISM, you are right. तुम यही कराओ मेरे से, कभी बाबू बुलवाओ, कभी छोटू बुलवाओ, कभी छोटू मत बुलवाओ, यही कर रहे हैं ना हम यहाँ पे ध्यान दो, इधर आंसर करो. Parents comes with their 9-month-old baby to the pediatrician with complaints of baby being very lethargic and feeding difficulties. Baby seems to be pallid and very weak. On complete blood count, hemoglobin was 6.8 gram per deciliter with near normal TLC and platelet count. On HB electrophoresis, HbA was reduced and high HbF was noted. All are true regarding the given scenario except. आ जाओ. अरे इसको स्टेरॉइड नहीं देना है भाई. यहाँ पे देखो ABCD. See this, solve the questions. तो कितने मंथ का बच्चा है? 9 मंथ का बच्चा है. At 9 month, HbA should start increasing and HbF should start decreasing. Till the 6 months of life, infant life, HbF is more. But उसके बाद तो HbA ज़्यादा होना चाहिए. But यहाँ पे क्या है बेटा? HbA reduced है. And still the HbF is more. So first thing is, चलो बहुत अच्छी, very good. आपको क्या निकालना है बेटा? All are true regarding the given scenario except. ठीक है बेटा, अभी वो पानी वाली बात अभी तो सच हो जाएगी. 9 महीने का बच्चा है, हीमोग्लोबिन F इज मोर, ये डायग्नोसिस बन रहा है छोटू बीटा मेजर. बीटा थैलेसीमिया मेजर में ही तो होता है ना. HbF ज्यादा कब होता है? बीटा थैलेसीमिया मेजर. इन अ बीटा थैलेसीमिया मेजर वेरेवर वी आर हैविंग थैलेसीमिया, तो ये साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन कौन सी है? ये तो मनमोहन सिंह है ना भाई, साइलेंट PM. सो ये थोड़ी है. What is the pathogenesis for beta major? This is your beta major का होता है बेटा nonsense. So this is a wrong statement. General presentation is after 6 months of age, yes, because till 6 months HbF is more. So beta major will never be seen before 6 months of age. It's generally post 6 months. Chromosome 11 is involved in mutation, yes. And blood transfusion cannot cure the patient. Yes, you cannot cure it. It's a genetic disease. The blood transfusion say you can help the patient, but you cannot cure the patient. So all these B, C and D, they cannot be the answer. What is the answer for this question? A. ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे ना मेरे को ये प्रूव नहीं करना है आपको कि कितना आता है क्या नहीं आता. ये सारी बातें आपको पता है. All these things, आप मेरे को ये बताओ, we are solving questions from last 1.5 hours. What are the things I have asked you which are not given in your workbooks? लिखी हैं चीजें, but the way of asking has changed, and this gives you tension in the exam. ये सारा material, whether you have read it here or you have read it anywhere else on any platform, all this material you must have read. But then, because there are small things changed, and then, you know, the scenario becomes after the exam or in the exam कि अरे यार पता नहीं कहाँ से आ गया ये. ऐसा नहीं. ठीक है, तो पढ़ना ध्यान से है and you have to apply. ठीक है? नहीं हृदय ऐसा नहीं करना है बेटा, कहीं नहीं जाना है. लो हीमोग्लोबिन A, हाई HbH. HbH disease, बेटा you all must be knowing 3 alpha gene deletion. HbH. Low hemoglobin A in a patient and high HbA2
whenever there is high HbA2 in a person, then this disease, beta yaad aayega. You would think about it. When somebody would tell you, अब आपने एक बार देख लिया इस चीज को, तो याद आएगा छोटे, याद आएगा. इतनी बात मेरे बोलने के बाद भी तो याद आ रही ना. There were times when you were taught somewhere where people had taught you, but you never understood what they are asking even after being taught. तो अभी समझ में आ रहा है ना आपको. So इसको पढ़ने का तरीका है. It's just now you have seen it once like this. Now you know कि यार ऐसा भी हो सकता है. थोड़ा ऐसे पढ़ना है. These are the kinds of mistakes we are doing. हमें पता था इसका ये आंसर है. अब जैसे इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने ए आंसर करना शुरू कर दिया, मतलब सॉरी डी आंसर शुरू कर दिया आपने. एक्सेप्ट था यहाँ पे, बाकी कुछ देखा ही नहीं. साइलेंट वर्ड पे नहीं गए. आपको लगा ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, पॉइंट म्यूटेशन होती है उसके अंदर बेटा, लेकिन वो नॉनसेंस है. ठीक, चलो. लो हीमोग्लोबिन ए एंड हाई हीमोग्लोबिन A2. वेरी गुड. बीटा माइनर. Role of hydroxyurea in sickle cell anemia. Whenever a patient of sickle cell anemia comes to us, there are two things we do immediately. We start with hydroxyurea and we give oxygen therapy. ठीक है, क्यों? Because we know that these sickled RBCs, when we give them oxygen, it reduces sickling. And why we are giving hydroxyurea, if they ask you, to increase the level of HbF. Because HbF क्या करता है बेटा? HbF leaves the oxygen with difficulty. तो होगा क्या? जल्दी से ऑक्सीजन जाएगी नहीं. And whenever oxygen will not be left by the RBC will not sickle. HbF bind करके रखता है ऑक्सीजन से ज़्यादा टाइम तक. That is why we are giving hydroxyurea. Target cells. Yeah, Simran, Madhumita, Jatin, yes. Yes, target cells beta, they are seen with thalassemia and sickle cell anemia. Again, target cells में क्या होता है? Problem with the RBC membrane. When the RBC is coming, the central part of the RBC membrane is going up, more hemoglobin in the center. And or RBCs are osmotically fragile in thalassemia, yes or no? Please give me the answer in yes or no. Are the RBCs are osmotically fragile in thalassemia? वेरी गुड बेटा. थैलेसीमिया के अंदर ना फ्रैजिलिटी इंक्रीज नहीं होती है. ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल आर सीन विद हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इन विच द फ्रेजिलिटी इज इंक्रीज्ड. थैलेसीमिया में प्रॉब्लम क्या होता है? थैलेसीमिया में आरबीसीज आर हार्ड, सो दे डू नॉट ब्रेक. दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस नेस्ट्रॉफ टेस्ट, naked eye single test tube osmotic fragility test. These RBCs which are there in thalassemia, they do not break. And when they do not break, you will be able to, when you're putting the test tubes in front of the line paper, so if the RBCs do not break, you'll not be able to see the lines. In thalassemia, you won't get it because the RBCs are not breaking because they're hard. Whereas in a normal person, in Nestrov test, because you are adding 0.3% NaCl, the RBCs, our RBCs are resist the osmotic fragility till 0.4. Burst kar jayegi beta. And the blood will become clear and you will start seeing the line. So dhyan rakhna hamisha, osmotic fragility increases with hereditary spherocytosis, whereas in thalassemia, the RBCs are hard. Okay? Yes, rigid. Avinash, you are right, they are rigid. 14th. A 53-year-old male is diagnosed with secondary hyperparathyroidism. Further workup reveals high serum calcium, high serum creat. Okay. On X-ray, osteolytic lesions were seen on the skull. Bone marrow examination revealed abnormally high levels of plasma cells with very high levels of monoclonal protein deposited inside the plasma cells and in the patient's serum. So M protein is getting increased. I hope by now you people must have understood that what is the diagnosis. But यहाँ पे भी दिया हुआ है छोटू, the diagnosis of the multiple myeloma is being made. Out of the given options, which one signifies deposition of M protein within the nucleus of the plasma cell?
Yes, you are right. Pushpak, Ravi, Dr. M, Jatin, Saddam. I'm taking the names. बेटा देखो, देर आर, पहले यहां देख लेते हैं, चलो इन चारों सेल्स को अपन देखते हैं. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये मल्टीपल माइलोमा है. मल्टीपल माइलोमा में यू आर गेटिंग सेल्स which are having a lot of plasma cells are getting more and more, and you are having a lot of plasma cell forming M protein. What did I teach you? Whenever the M protein is getting deposited inside the nucleus of the plasma cell, nucleus beta is the daddy organelle. So D for daddy, D for Dutcher. Whenever due to M protein deposition, the plasma cell become like a, like a fire kind of a thing, it's a flame cell. ये क्या है छोटू? You are getting lot of vacuoles inside the cytoplasm of the plasma cell, and this is a MOT cell. 2-time picture-based question in your exam. This is MOT. ये क्या है? Whenever you are having these vacuoles kind of a thing in the cytoplasm, but it is not entirely filling up the cytoplasm, you call it as Russell cell. So there are 4 cells: Dutcher, flame, MOT, Russell. अभी यहाँ तो एकदम simple पूछा था ना? Daddy, nucleus, भाई. What is the question? M protein within the nucleus. So what is the answer for M protein within the nucleus? The answer for M protein within the nucleus is your Dutcher cell. It is your Dutcher cell. Yes, Avinash. D for daddy, D for Dutcher. ठीक है बेटा, आगे आओ. Most common antibody seen with multiple myeloma. बताओ मेरे को, what is the most common antibody seen with multiple myeloma? हाँ, अब दिया ना आपने आंसर, विभूति, अंशुमन चौहान. Now you people are giving the right answers. Now please tell me, yes Gaurav, you are right. Bhavik, you are right. Shweta, you are also right. Yes, the most common antibody seen with multiple myeloma is IgG. अगर ये नहीं दिया हो तो A. Type of light chain. Very good Ankush, Madhumita. Yes, Ankush, Jatin, Ajay, Bharat. You all know this. Right. अगला बताओ छोटू, next पे आ जाओ फटाफट. Type of light chain बताओ. Type of light chain is, yes, kappa and lambda. Yes, kappa and lambda. And most common translocation, beta, most common translocation seen with multiple myeloma is 11-14. Multiple myeloma में, because multiple myeloma is an antibody dependent disorder because of problem with the antibody production, and the gene for antibody is located on chromosome number 14. So all the translocation with multiple myeloma will have 14 in common. तो कौन कौन सी होती है बेटा? 4-14 होती है and 14-16 होती है. But the most common overall they are asking, and for a most common it is translocation 11-14. ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा. चलो, 58-year-old female came to the hospital with complaints of heaviness in the abdominal area and constipation. She also complains of bleeding from the gums sometime. CBC reveals marked eosinophilia and basophilia with very high TLC. Metamyelocytes at 33%, myelocytes at 29%, and band form is 23%. Comment on the diagnosis. AML M5, AML M3, CML and leukemoid reaction. Lost soul. बेटा टेंशन नहीं लेना है तेरे को, ठीक है? गलत हो रहे हैं, एनालाइज करो कि क्यों गलत हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो गई यार, कहां गलती कर दी. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आओ फटाफट. ओके, नॉलेज, Alan. Okay, so this is all over the place. Some people are saying AML M5, some people are saying CML, some saying AML M3. Beta dekho, just by looking at the options, you do understand that we are talking about something where, it's a leukemia kind of a problem, right? Now you are, देखो leukemia जो है ना बेटा दो तरीके से होता है. Just to understand that when do we say it's a chronic leukemia and an acute leukemia, उसको एकदम simple तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ. Just listen to me for 5 minutes. We have a hematopoietic stem cell.
Hematopoietic stem cell beta, it converts into myeloid and lymphoid. ठीक है? Myeloid cell, देखो, how many cells do you have in the blood? 7 cells है. ठीक है? This question, whether it is AML, CML, CLL, ALL, I get maximum. Maximum questions are this. So let's do it. यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, आपके लिए easy हो जाएगा. You are having 7 cells. कैसे? 1 RBC, 1 platelet and 5 types of WBCs. So total 7 cells हो गए. Out of those 7 cells, बेटा, myeloid cell is giving you 6 cells. Lymphoid is only giving you a lymphocyte. ये क्या देता है बेटा? Lymphocyte देता है, only lymphocyte, nothing else. Now what happens is that your myeloid cell, ऐसा नहीं है कि directly आपको these 6 cells it will give. It will, divide into multiple different cells. पूरा चलता है, like, first you will have a myeloid cell, then, metamyelo, myelo, band form. There are multiple cells. Then this eventually generally gives us neutrophil the first. अगर हम WBC की बात कर रहे हैं, बाकी this is the cell which is going to give us platelet also and even the RBCs. For a lymphoid cell actually forms the lymphocytes. Only lymphocytes. It will also bifurcate and divide. अभी होता क्या है बेटा कि ये जो cells है ना, instead of directly going into the blood, first these cells actually come out of the bone marrow and go into the lymphoid tissue. What is the lymphoid tissue? Generally, like for T cells, it is your thymus. For B cells, they are getting matured also in bone marrow, but then they go and sit in the lymphoid organ. And then, when they are sitting in the lymphoid organ, let's say lymphoid, lymph node में बैठे हैं, so whenever an infection will come, this infectious agent will be catched up by your APCs, antigen presenting cells in the body, and will be shown to your lymphocytes, B and T lymphocytes also in your lymph node. And then one of the type of a B cell or a T cell, depending upon what kind of pathogen you have, they will increase in number, and then from these lymphoid organs, they are gonna come into your blood. तो यहाँ से आएंगे, तो ऐसे बनता है. So again I am repeating, myeloid cell directly will bifurcate, mature and give you 6 blood cells into the blood vessel. Lymphoid cell multiply करता है, divide करता है, mature करता है, but give the cells only lymphocytes दे रहा है ये. This will go to the the lymphoid organs, and then afterwards from the lymphoid organs it will come and go into the blood. ठीक, lymphocyte. When the pathogen comes, तो उसमें clonal selection and clonal expansion होता है. We cannot go into more detail. Ab, what is leukemia? Leukemia is when you are having any kind of mutation here. Whether if it's a myeloid leukemia, so that means a myeloid mutation. If it's a lymphoid leukemia, that means lymphoid mutation. Whenever there will be a myeloid mutation, so all this bone marrow will be filled with abnormal myeloid cells. And you will see these abnormal myeloid cells in the blood. You call it as a myeloid leukemia. If the lymphoid mutation is there, and everything is filled with your, lymphoid abnormal cells, and it is going into the blood, you call it as a lymphoid leukemia. For a lymphoma to occur, lymphoma is a cancer which is seen in the lymphoid organs. And which cells are reaching in the lymphoid organ? Only your lymphoid origin cells. So beta, lymphoma में कभी भी myeloid cells नहीं होते. That is why it is called as lymphoma. Cancer occurring from this particular lineage. Only L, no M in that. तो पहले तो ल्यूकीमिया लिम्फोमा में डिफरेंस हो गया. अब ये जो म्यूटेशन है ना छोटू, दिस म्यूटेशन विच कैन अकर इन अ माइलॉइड और लिम्फोइड सेल, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ल्यूकीमिया. लिम्फोमा छोड़ दो अब. ल्यूकीमिया में व्हेनेवर द म्यूटेशन अकर्स, दिस म्यूटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. 1, देखो म्यूटेशन है, सो इट विल आस्क द एबनॉर्मल सेल्स टू proliferate. There will be high number of cells which are being formed. But if the mutation is that it arrests the maturation, only one kind of cell is getting proliferated and it is seen in the blood, only one type, then it is acute. But if the proliferation is happening and the maturation is also seen, then that becomes chronic. तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो. You are having, आपने क्या पकड़ा? More than 20%. बेटा more than 20% नहीं. You see metamyelocyte, myelocyte, band form, everything is increasing in number. Too much of cells. So is there any maturation arrest which has happened? No. If there is only one kind of a cell which is seen more, then I call it as acute. But when I am having
The whole lineage getting more and more and more. No arrest of maturation. That means it is chronic. तो ये क्या है इसका आंसर? It is chronic myeloid leukemia. ठीक है? No. बेटा क्रॉनिक माइलोइड में सब कुछ आ रहा है ना. देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है eosinophilia, basophilia. You are getting mature cells more in the blood. So whenever you are having mature looking cells in the blood, छोटे, then it's not a maturation arrest. And if it is not a maturation arrest, you cannot have acute. Acute में A for acute, A for arrest of maturation. Okay? Yes. Yes. It is so easy. चलो अगला बताओ फटाफट. अब इजी हो गया ना. अभी आगे करते हैं. 5-year-old boy came to the hospital with his parents having complaints of fever, weakness, fatigue, pallor and purpuric spots on the skin. His CBC shows hemoglobin 8.1, TLC 2.2 lakhs. Bone marrow evaluation reveals more than 36% blast which are TDT positive. More than 36% blast. Abnormal cells. Clinical examination shows mediastinal and testicular infiltration. Comment on the diagnosis and gene mutation best correlates with this organ involvement. तो छोटू सबसे पहले तो diagnosis क्या है? Now again from things which I have just explained you would understand that there is not the entire lineage which is getting more. It is more than 36% of blasts which are seen in the bone marrow. तो बेटा एक ही तरीके का सेल दिख रहा है, पूरी lineage नहीं दिख रही. So this is what? Acute. Secondly, because the cells are TDT positive, terminal deoxynucleotide transferase, तो बेटा कौन सा हो गया ये? Lymphoblast. It's a lymphoblast. And if I am having a acute leukemia, lymphoblastic leukemia, तो ALL है. And whenever we are talking about, always remember this guys, whenever we are talking about organ infiltration, cerebral, mediastinal, testicular, मैंने आपको बताया था बेटा सेंट्रल रहता है तो ALL होता है. And between B type and T type of ALL, whenever we are talking about as organ involvement, it is generally T type of ALL. Yes, I understand that T type of ALL is more commonly seen in adults, but बच्चे में भी हो सकता है बेटा. So what is the correct answer for this question? Correct answer is not gene. So अपना जो ALL होता है ना छोटू, ALL, B and T, B के लिए बेटा आपको दो जीन याद रखने हैं, PAX5 and EBF. Whereas T के लिए you have to remember not gene and T जब भी किसके साथ T रहेगा बेटा? Organ involvement. Whenever I am talking about organ involvement, then that means it is my T type of ALL. All right? Yes. Now you people are right. Thank you very much. चलो, most common leukemia seen with Down syndrome. फटाफट बताओ बच्चे. Most common leukemia seen with Down syndrome. Yes, Vibhuti, Smruti, Lavkesh, Pushpak, you all are right, beta. Yes, you all are right. Thank you very much. Yes. Very good, beta. Most common leukemia, overall most common leukemia with Down syndrome is ALL. But if it is less than 3-year-old child, then it is AML M7. Yes, Paras, Cardio, Shajal, Vibhuti, Ankush, you are right, beta. Stain for lymphoblast, अभी मैंने आपको डिस्कस किया है. Stain for lymphoblast, beta, it is either PAS or TDT. So whenever there is a lymphoblast, it is either per iodic acid shift positive or terminal deoxynucleotide transferase positive. Lab score with CML. What is this lab? बेटा ये lab जो है ना leukocyte alkaline phosphatase होता है. So who will tell me what is the lab score with बेटा रुक जा मैं. It is seen with M3. All rods are seen with M3. चलो. Yes, lab score is less with CML. Lab will be positive with normal functioning WBCs. In CML, we see WBCs which are
looking like normal WBCs because the maturation arrest is not there in chronic leukemias, but these WBCs are abnormal functioning. So lap is less. ये क्या है छोटू? What is it? Which cell is this? Yes, 40 से कम होगा. You are right. Which cell is this छोटू? Yes, you people are right. This is your faggot cell. Crisscross है ना ये? These are your OR rods, you know, these rods which are your crisscross. So this is faggot cell. AML-M3. और ये OR rod हो गया बेटा, single. तो इसको आप क्या बोलते हो? OR rod. For a single, you are calling it as OR rod. When they are crisscross, you are calling them as faggot cell, seen with AML, acute myeloid leukemia, and that too AML-M3. ठीक है? Parents came with their 2-year-old child to the pediatric OBT with complaints of fever, lethargy, loss of appetite, multiple bleeding episodes. ठीक है? On complete blood count, hemoglobin is very low with very high TLC. Hemoglobin कम है, TLC बहुत ज़्यादा है. On PBS, more than 30% of immature cells are seen in blood, which are what? Which are MPO positive, myeloperoxidase positive, more than 30% of cells. On fish, ये मछली नहीं है बेटा, ये काट के पका के खा जाओ कभी, ये मछली की बात नहीं हो रही. This is fluorescent in C2 hybridization. This translocation 1517 is noted. The gene translocation related to this condition. ठीक है? Very good Jatin. Very good. Shweta, you are also right. Jayendra, you also right. Shejal, you are also right. Beta, this is what? This is AML, promyelocytic leukemia. You know, PML RARA gene. This is the correct answer for this. On chromosome number 15, we have PML, then RAR. तो PML RARA gene है बेटा. तो correct answer is PML RAR, AML M3. More than 30%. तो ये acute हो गया. एक single तरीके का cell दिख रहा है. MPO positive मतलब myeloid cell है. MPO मतलब myeloperoxidase is positive for a myeloid blast. And when you are having translocation 15-17, तीन तो translocation पढ़ाई AML में. 8-21, 15-17 and 16-16. This is seen with M2, this is seen with M3 and this is seen with M4. और अपन ने पढ़ा था ना बेटा, PML 15 पे होना चाहिए, RAR 17 पे होना चाहिए, and when the translocation occur it becomes RARA, PML RARA gene. So this is what. Okay? चलो. AML associated with Down syndrome, 3 times I've already told you in this AML M7. AML associated with chloroma. बताओ फटाफट. AML associated with chloroma, yes. बेटा with chloroma, M2. Most common AML. AML with gum infiltration, this is again your M4 and M5. Yes, AML M3. AML M3 is associated with DIC. You are right. Then AML with worst prognosis. बेटा अपने 8 टाइप्स होते हैं ना, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 तक. 8 types we have. So worst prognosis is M0. When you're not able to differentiate. And AML associated with OR rods, this is going to be M3. और ये जो OR rod वाला होता है ना बेटा, this AML M3, this is also associated with DIC. Disseminated intravascular coagulation. चलो. A middle-aged man came to medicine OPD या medicine department with repeated episodes of fever and throat infection. Okay? Routine blood. देखो बेटा, जब भी image based question आ रहा है ना, पहले image को देख लो. ये image देखो आप. फिर क्या है ना, लास्ट लाइन पढ़ो. कमेंट ऑन द एरो मार्क स्ट्रक्चर. तो एरो वाला स्ट्रक्चर देखो. मुझे पता है बेटा तुम लोगों को दिख जाएगा. ये सेल है. अब इसके बाद क्या है ना, अब इसके बाद यहाँ देख लो. ये क्या लिखा है? हेरी सेल, स्मज सेल, मेगालोब्लास्ट, फैगट सेल. Only by this, by looking at the image, you would understand the answer. I know you people know the answer for this question. मेरे को पता है तुमको आता है. ठीक है, सब लोग सही मारे हैं. मेरे को पता है, I know कि सबने स्मज मारा है. टाइम बच गया तुम्हारा. अब लेकिन ऐसा नहीं छोटू, ऐसे नहीं करने का कि डायरेक्ट स्मज को मार्क करके आगे निकल गए अपन. नहीं, क्वेश्चन फिर भी पढ़ने का है अपने को. वी नीड टू रीड द क्वेश्चन.
ठीक है. Middle-aged man came to medicine OPD with repeated episodes of fever and throat infection. Routine blood investigation revealed a case of pancytopenia, but the absolute lymphocyte count is severely increased. तो ठीक है यार, मतलब lymphocyte ही lymphocyte बन रहे हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है. Coombs test was also positive. तो वो एंटीबॉडी बन रही है, मतलब PBS is attached below. Comment on the arrow mark structure. तो उसमें अच्छा है. CML में ये सब होता है बेटा. CML के अंदर you have pancytopenia, and what is pancytopenia with CML is called as Evans syndrome. Do you remember? Evans syndrome. Pancytopenia in chronic lymphoid leukemia. ठीक है. चलो, इस स्मज सेल का दूसरा नाम, this is your basket cell, this is your parachute cell, और ये वाली जो this, only and only lymphocytes you will see, only one kind of cells you're going to see, and that is why it is called as convent appearance. ठीक है. चलो, drug you use to treat CML, फटाफट बताओ बेटे. Yes, you are right, Shubham. 13q negativity, this is the most common translocation seen with the patients of CLL. I am very happy. Yes, good. Yes. What is the drug which you are using to treat the CML? So drug used to treat the CML, very good beta, imatinib. This is what? This is a tyrosine kinase receptor inhibitor. Because in CML, due to translocation 922, we are having excess proliferation of tyrosine kinase receptor, and we are blocking it by this. What is the drug? Nice. What is the drug, Chotu, which we are giving to treat the patients of PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, where we have the mutation of PIGA gene and we have two protectors. ठीक है, तो ये तो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया ये वाला आंसर. व्हाट इज द जीन डिफेक्ट इन पीएनएच? यू आर हैविंग जीन डिफेक्ट, पिगा जीन डिफेक्ट, एंड ड्यू टू दिस पिगा जीन डिफेक्ट वी आर हैविंग लॉस ऑफ CD55 एंड लॉस ऑफ CD59. CD55 एंड 59 में विच इज मोर इंपॉर्टेंट छोटू 59. ठीक है, अब मुझे बताओ पीएनएच की ड्रग. एलन, प्रवीण, श्वेता शर्मा, यू आर राइट, very good. Eculizumab. ये क्या है बेटा? Eculizumab, this is your C5 inhibitor. Eculizumab is your C5 inhibitor because in PNH क्या होता है बेटा? This protective covering over the RBC is gone, and then your complement, MAC C5b 6 7 8 9, it goes and damages the unprotected cell. So C5 को इनहिबिट कर दोगे तो MAC इनहिबिट हो जाएगा, so RBC damage will be gone, मतलब it will be saved. Very good. बेटा ये वाला सेल कौन सा है? What is this? These two. देखो, both of them are RBC. Whenever you are having an RBC over which you are seeing a dot up, ऐसे ऊपर दिख रहा है, एक कोने में ऊपर, these kind of bodies are called as, इनको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मेरे को? Yes, these bodies, they are called as Heinz bodies. And whenever I am talking about a deposit inside the RBC, ऐसे अंदर एक single deposit आ रही है, these are called as, ये दूसरी bodies हैं बेटा, these are called as Howell-Jolly. So Heinz है and Howell-Jolly है. अब ये क्या है? This is precipitated hemoglobin. और ये हॉवेल जॉली में बेटा जो ये ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज प्रेसिपिटेटेड डीएनए. सो याद कैसे रखना है? हाइंस बेटा, कैचअप लाल कलर की होती है, हीमोग्लोबिन रेड. सो प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन हाइंस बॉडी, एंड प्रेसिपिटेटेड डीएनए मटेरियल अगर है तो उसको हम हॉवेल जॉली बॉडी बोलते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ऑन परफॉर्मिंग बायोप्सी ऑफ अ पेशेंट विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी with a history of weekly on and off fever, inflammatory infiltrate is seen with presence of giant cells, which are, ध्यान से, which are CD15 and 30 negative and CD20 positive. Image is attached below. Spot the diagnosis. बताओ छोटू. Tell me. हाँ, Heinz body is seen in G6PD deficiency anemia. You are right. And Howell-Jolly is seen in megaloblastic anemia. That is also you are right.
Very good, very good. Just by the image only you understand that it's a popcorn cell. ठीक है, अब डायग्नोसिस निकालना है आपको. What is the correct answer for this question? देखो, this is CD15 and 30 negative, but CD20 positive. So 15-30 नेगेटिव हॉजकिंस लिम्फोमा है ना, ये आरएस सेल हो गया बेटा. ऑप्शन से समझ में आ रहा है अपने को. दिस इज आरएस सेल हॉजकिंस लिम्फोमा. हॉजकिंस लिम्फोमा 5 टाइप्स. ये टेबल कर लेते हैं अपन. हॉजकिंस लिम्फोमा 5 टाइप्स. कैसे कैसे? दिस इज योर नॉन क्लासिकल एंड देन वी हैव क्लासिकल 4 टाइप्स. यही तो था. अब इसमें परसेंटेज देखो बेटा. नॉन क्लासिकल ओनली 5%. योर क्लासिकल टाइप्स in total they are 95%. But इंडिया में मोर कॉमन क्या है? इंडिया में मोर कॉमन मिक्स सेलुलैरिटी, whereas वर्ल्ड वाइड NSHL है. गुड प्रोग्नोसिस के अंदर भी NSHL है, लेकिन बेस्ट प्रोग्नोसिस इज योर नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट, नॉन क्लासिकल वाला. ठीक है. आरएस सेल देखो बेटा, आरएस सेल 5 तरीके का होता है. पॉपकॉर्न, प्लियोमॉर्फिक, क्लासिकल, लैक्यूनर, मोनोन्यूक्लियर. तो P फॉर P अपन ने मैच किया था क्लास में भी, P फॉर P. सो देखो ये क्या है? लिम्फोसिटिक पुअर. पुअर के साथ बेटा प्लियोमॉर्फिक. रिच के साथ क्लासिकल. M फॉर M लगाएंगे बेटा, मोनोन्यूक्लियर. M फॉर M. एंड स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग, मतलब गैप क्रिएट हो जाएगा, सो लैक्यूनर. एंड नॉन क्लासिकल के साथ आता है पॉपकॉर्न. दिस पॉपकॉर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फोसिटिक एंड हिस्टियोसिटिक वेरिएंट, LNH वेरिएंट. वन थिंग टू नोट दैट दिस, ये वाले जो है ना बेटा, दिस मोनोन्यूक्लियर एंड क्लासिकल, दे कैन बी सीन इन बोथ. ये दोनों में दिख सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. क्लासिकल वाले they are positive for CD15 and 30 and negative for 20. But non-classical वाला बेटा negative for 15 and 30 but positive for 20. तो ये आपकी complete, this is your complete table. If you know this table, then the Hodgkin's lymphoma question generally would be solved. ये याद रखनी है आपको ये table. ठीक है. अब इसके अंदर अगर आप देखते हो तो सिंपल हो गया ना यार. CD15 and 30 negative, that means only one type of Hodgkin's lymphoma can be 15 and 30 negative, and that is your non-classical. What is the non-classical one? Nodular lymphocytic predominant. P for P, either there can be a popcorn or a pleomorphic, but pleomorphic last में होता है यार, पुअर वाले में. So बचा क्या? Popcorn. What is the other name of popcorn? Lymphocytic and histiocytic RS cell. So the correct answer for this question is A. Okay? चलो. This is again and again, you know, we are repeating this image again and again. Why? Because I know you people are fed up, because ये हमेशा आता ही रहता है. But ये question बेटा ये इतनी बार आता है कि इसको कुछ कर नहीं सकते आप. This is your RS cell, owl-eye appearance. And here, this is your CMV, cytomegalovirus, which gives you owl-eye inclusion. How do you differentiate? For the RS cell, Chotu, you are having all this pinkish cytoplasm, proper 2 nucleus and 2 nucleoli. Whereas for your CMV, you see in the cytoplasm, it's bluish because there are viral inclusions. And even you are having nuclear inclusions too. तो ये more bluish होता है, ये more pinkish होता है. इसके अंदर proper 2 nucleus, 2 nucleoli and pink color cytoplasm, whereas this is more basophilic. ये bluish होगा. ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए द वायरस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इज CMV. सो कहीं पे भी आउलाई आए कूद के RS नहीं मारना बेटा, देखना है वो क्या बोल रहे हैं. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन्स, CMV. ग्राफ्ट रिजेक्शन, CMV. ठीक. चलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल. आई मीन यू नो, आई गॉट अ मैसेज ऑन माई WhatsApp ऑल्सो कि सर थक नहीं गए हो क्या आप? ठीक है, इतनी देर से चल रहा है. सो आर यू नॉट टायर्ड? भाई तुम लोग भी यू नो थकी गए होगे ऑब्वियसली, बट देन यू नो रीड दिस. बिल्कुल सच सच बताऊं तुमको तो यार देखो, आई एम ऑल्सो टायर्ड. लगातार बोल रहे हैं अपन, 2 घंटे हो गए, 2.25 घंटे हो गए. बट
तुम लोग भी थक गए हो, बट बेटा ऐसा नहीं, इसमें इस थकान को लेके नहीं चलना है अपने को, क्योंकि अपने को तो जीतना है ना यार। 20 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है ना। वो जो ड्रीम लेके तुमने ज्वाइन किया है, जो तुम पढ़ रहे हो 20 तारीख के लिए, 20 जनवरी के लिए, वो वी हैव टू अचीव दैट ड्रीम। सो स्टे स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग, बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग, द हार्ड वर्क विच यू आर डूइंग, द रिजल्ट डेफिनेटली इज गोना कम। और वो प्लॉडेट्स भी तुमको ही होंगे यार। तो यार इफ वी आर डूइंग द हार्ड वर्क और उसका फायदा तुमको होगा, तो इवेंचुअली फिर उसका फायदा इनडायरेक्टली हमको भी होगा ना। सो वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, लगे रहना है अपने को, हार नहीं माननी है, जाना नहीं है। वी हैव टू फाइट फॉर दीज लास्ट 30 days. A 10-year-old boy with mass in the abdomen, on imaging the para-aortic lymph node is enlarged. Okay? बिल्कुल रोहित, 100% आएगा, 100%. On biopsy, starry sky appearance is seen, confirming the diagnosis of Burkitt's lymphoma. सब कुछ दिया है भाई यहाँ पे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है. True regarding the same. बस अपने को ये देखना है कि बॉस what is the true statement. तो ये starry sky appearance है ही. First statement, most common translocation is 822. There is a ABL gene mutation or there is a, ठीक है, अरे वाह अली, बहुत अच्छा, क्लैपिंग करो. देखो जिन जिन लोगों ने ए आंसर किया है, मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, ऐसे लाइव चल रहा है, बट ये गलत बात है ना. इतनी जल्दी में आंसर नहीं करना चाहिए बेटा. यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रूथ. बेटा देयर आर 3 ट्रांसलोकेशन विद बर्किट. बर्किट स्टार्ट्स विद बी, तो बी लुक्स लाइक 8. देयर आर 3 ट्रांसलोकेशन, सो ऑल आर डन बाय 8. बर्किट इज एन इवन लेटर. Even letter है ना, so the second chromosome with which it will have a translocation will also be even. So बेटा ये होता है 8-2, 8-22, 8-14. ऐसे याद करो इसको. I know the correct way of writing is 2-8, but then it is 8-2, 8-22, 8-14 to learn. और इसमें से जो more common है वो 8-14 है छोटू. More commoner in comparison to these two. तो ये तो गलत हो गया. ABL, BCR यहाँ नहीं होता बेटा. C-MYC, yes. Burkitt is seen with C-MYC mutation. It's an oncogene which gets mutated. तो ये C-MYC mutation है. And strong association with 11-14 नहीं. 11-14 यहाँ पे नहीं है. 11-14 किसके लिए? 11-14 यहाँ बताओगे आप लोग मेरे को. देखो, whenever we are talking about a non-Hodgkin's lymphoma में अपने को 5 लिम्फोमा पढ़ने हैं. Marginal zone, mental zone, फॉलिक्यूलर, DLBCL मतलब डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा एंड बर्किट. बेटा मार्जिनल जोन जब भी आप देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉलिकल, अ बी फॉलिकल, बिकॉज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमास, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस, दे आर बी टाइप ओनली. तो नॉन हॉजकिंस में भी वी आर टॉकिंग अबाउट अ बी टाइप नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा. उसमें 5 है. मार्जिनल जोन सबसे बाहर वाला जोन है बेटा, ये आउटर मोस्ट जोन. तो इसका जो ट्रांसलोकेशन है, दिस इज योर 11-18. ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्टोमा. तो माल्ट टिश्यू में होता है तो माल्टोमा भी बोलते हैं इसको. स्टमक इलियम इस जगह दिख सकता है. इतनी बात याद रखनी है दैट द ट्रांसलोकेशन इज 11-18. ठीक है, सबसे बाहर वाला है. देन कम्स द जोन इनसाइड द मार्जिनल जोन, दैट इज योर मेंटल जोन. तो मेंटल जोन के लिए द ट्रांसलोकेशन इज ट्रांसलोकेशन 11-14. ये अंदर आ गया ना, तो 11-14. On 11th number chromosome, your cyclin D1 gene is there, and 14th your, मैंने तुमको बताया 14th is for your antibody. That is why for multiple myeloma every translocation had 14. बताया था ना मैंने आपको. So ये वाला है. अब इसमें याद कैसे रखना है? Mental zone lymphoma के लिए the marker, first marker is cyclin D1. Second, it is CD5 positive but 23 negative, and one more marker to learn is SOX11 positivity. तो बेटा ऐसे याद रखो, साइकिल चलाते चलाते हाथ में सॉक्स पहना है और मेंटल हो गए. साइकिल चलाया, साइक्लिन जीन, सॉक्स पहने हाथ में और मेंटल हो गए. ट्रांसलोकेशन क्या है? 11-14. फिर बेटा इनसाइड जर्मिनल सेंटर वी हैव 3: फॉलिकुलर लिम्फोमा, DLBCL एंड बर्किट लिम्फोमा. फॉलिकुलर लिम्फोमा बेस्ट प्रोग्नोसिस नॉन हॉजकिंस. फॉलिकुलर में 2 चीजें. नंबर 1, एक तो बेटा देखो ये सारे एक ही जगह से आ रहे हैं ना. दिस इज 11-18, दिस इज 11-14. यहां पे 11 हटा दो. फॉर फॉलिकुलर इट इज ट्रांसलोकेशन 14-18.
11 हटा दिया, 14 ले लिया, 18 ले लिया. And follicular lymphoma has got two words, follicular lymphoma. So two words हैं, so which BCL molecule? BCL2. It will be BCL2 positive. Most common non-Hodgkin's is DLBCL. Idiopathic है, it is BCL6 positive. कैसे याद रखोगे बेटा? ये follicular lymphoma का क्वेश्चन ना कई बार आया आपके एग्जाम में. सो याद रखना BCL2 पॉजिटिव एंड CD10 पॉजिटिव बोलते हैं वो लोग. ठीक, सो दिस इज फॉलिकुलर. BCL6 DLBCL, इसका नाम बड़ा है ना थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 लेटर्स, तो ये BCL6 वाला है. फॉलिकुलर में 2 ही है तो BCL2 वाला है. और बर्किट अभी अपन ने किया. ठीक है, वी हैव डन फॉर बर्किट्स अफ्रीकन हिस्ट्री, ट्रांसलोकेशन आई हैव टोल्ड यू, मिक जीन, very aggressive, poorest prognosis non-Hodgkin's lymphoma is Burkitt, starry sky appearance. Okay, very good. Chalo, a 64-year-old chronic smoker came to the OPD with complaints of difficulty and pain while breathing. He is a sand mining industry worker. A mass has been noted on further evaluation. Sputum examination of the patient reveals ferruginous bodies. ठीक है बेटा, तो mass है. And when you have done the sputum examination, you are getting ferruginous bodies. Okay. Which of the following cancer is most commonly associated with this condition? So most common association with this particular condition. बताओ फटाफट. Okay. Nice. बिल्कुल बिल्कुल छोटे. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ब्रोंकोएल्वुलर कार्सिनोमा और मीजोथेलियोमा. यार छोटू बेटा देखो तुमको बेटा, दिस इज अ केस ऑफ एस्बेस्टोसिस. यू हैव अंडरस्टूड दैट बाय अंडरस्टैंडिंग द वर्ड फेरोजिनस बॉडी. दैट इज व्हाई यू आर गिविंग मी डी एज आंसर, बट डी आंसर करेक्ट नहीं है. Beta, we have discussed this. Again, you are making a very common mistake. Asbestosis के साथ there are two kinds of cancers. Either we are talking about a most common cancer or we are talking about a most specific cancer, Chotu. If we are talking about a more commoner cancer, then it is your bronchoalveolar carcinoma, or we can say adenocarcinoma in situ. Whereas when we are talking about a more specific carcinoma, बेटा ये तो अपन ने कितने अच्छे से किया था, it is your mesothelioma. So कहते ना बेटा बहना नहीं है एकदम से. You don't have to. Yes, broncho most common. Very good. Yes, Ankush, Kaushal, Srilekha, Shwet. Yes, yes, yes. So we are talking about more commoner one. मोर स्पेसिफिक नहीं पूछा बेटा मैंने. स्पेसिफिक पूछता तो मीजोथेलियोमा आता. तो करेक्ट आंसर इज ब्रोंकोएल्वुलर. एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद ब्रोंकियल एस्थमा. ब्रोंकियल एस्थमा इज टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी. व्हाट इज द एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन? एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन फटाफट से बता दो. कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का छोटू राम, इट्स ओके. अच्छा फटाफट एक बात बताओ. when I'm telling you the answer, didn't your mind take you to the point, oh यार ये मैंने पढ़ा था? Is it happening with you people कि हाँ यार पढ़ा था यार? Yes, you are right. IgG तो है, आंसर तो सही बता रहे हो, IgE ठीक है. बट ये बताओ कि ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो पढ़ी हुई बात थी, ऐसे कैसे हो गया? चलो, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन तो वहीं तो बात आ जाती है ना बेटा. अभी यू हैव 30 days लेफ्ट फॉर द एग्जाम आफ्टर टुडे. और इस 30 दिन में ना बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बताओ एक बार तो पढ़ सकते हो. लास्ट जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं उनको तो कर सकते हो. यू कैन डू दैट. तो उसको अगर ठीक से करोगे, इफ यू डू इट राइट, इट्स नॉट अबाउट डूइंग इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 times इन दीज लास्ट 30 days. मेरे को 4 बार करना है, मेरे को 2 बार करना है.
भैया ने बताया था, सर ने बताया था, मैडम ने बताया था, 3 बार रिवीजन मिनिमम है, 4 बार रिवीजन, अरे ये 3 बार बोलते हैं हमें 5 बार करना है। कुछ नहीं होता बेटा उससे, नथिंग हैपेंस। यू डू इट ट्वाइस बट डू इट प्रॉपरली सो दैट यू कैन गिव द आउटपुट। तो ये 30 दिन में एक बार और करो, लेकिन ढंग से करो। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, विच टाइप ऑफ एम्फाइजेमा? यू आर राइट, पैन असाइनर एम्फाइजेमा। ठीक है, एम्फाइजेमा में बेटा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइजेमा इज सेंट्री लोबुलर या सेंट्री असाइनर, सॉरी, सेंट्री असाइनर, दैट इज एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, बट पैन असाइनर इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंड दिस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज secreted by liver. That is why whenever we are talking about this pan asigner emphysema, if anybody is having an alpha 1 antitrypsin deficiency, patient will have cirrhosis also. So emphysema cirrhosis बड़ा खराब सा combination बन जाता है. Pneumoconiosis with ground glass opacities on HRCT. This is your most common pneumoconiosis. This is your silicosis. ठीक है, eggshell calcification भी याद रखना बेटा इसके साथ. Samter's triad. Yes, Samter's triad, when we are talking about a Samter's triad, this is your BA again, bronchial asthma. What is there in the Samter's triad? Beta aspirin intolerance. Then we are having, rhinitis, allergic rhinitis, and asthma. ठीक है, so this is your bronchial asthma where you see Samter's triad. Yeah. Cell responsible for ARDS. ARDS के लिए cell कौन सा responsible है बेटा? Cell responsible is neutrophil. Because neutrophil, देखो, अगर कोई आपसे पूछता है कि interleukin कौन सा होगा तो 8. What is neutrophil gonna secrete which is gonna cause all the problem? That's the enzyme protease, which is gonna damage. Which type of pneumocytes are going to be more damaged? That is type 2 because they are more in number. But surface area wise, which is going to be damaged more? Type 1. Okay. So this is ARDS. ये बेटा छोटा सा एक टेबल है, इसको मैं क्विकली आपसे बोल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख के जाना. मोस्ट कॉमन ओवरऑल कैंसर इन इंडिया इन द लंग्स, दैट इज लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली इन इंडिया, दिस इज स्क्वैमस. वर्ल्ड वाइड एडिनो. स्मॉल सेल वर्स्ट प्रोग्नोसिस कैंसर. ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? ओनली द पॉइंट्स विच आर हाईलाइटेड. फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर इज एडिनो. देन स्मोकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कॉज इज स्मोकिंग, बट द कैंसर विच इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड और स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग इज स्मॉल. पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, strong association, small cell. What is the paraneoplastic syndrome which I am seeing with squamous cell carcinoma? This is your hypercalcemia. This is the most common paraneoplastic syndrome. I hope you have also highlighted this in your workbooks, and people who are not in MIST, please be very sure about seeing this when you go before the exam. Then what is the paraneoplastic syndrome which we are seeing in the small cell carcinoma? This is your SIAD and Cushing syndrome. Marker. Beta synaptophysin, chromogranin, neuroendocrine cell markers हैं which are very, very, very important when you think about a small cell carcinoma. And I hope you remember this Azopardi effect and lipidic pattern. Azopardi effect is seen with small cell, and adenocarcinoma के साथ it is lipidic pattern which is also called as butterfly pattern. तो ये जितना भी highlight किया हो बेटा, minimum this much you should know before you go for the exam. 68-year-old smoker came to the emergency with severe chest pain. On ECG performed, inferior wall MI is noted. Biochemical analysis of the cardiac enzyme will show which of the following finding. Cardiac enzyme को अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा? Number 1. अरे मनोज, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Number 1. LDH1 lesser than 2 in the patient's blood. LDH2 less than 1 in the patient blood, low titers of myoglobin, or none of the above. देखा बेटा, अब ऐसा नहीं है that you people do not know the answer. You know, कहाँ से पूछ रहा हूं मैं ये question? I am asking this question from LDH flip. Now we all know that normally patient के blood में
LDH2 is more than 1. And in a normal person, इसके heart में LDH1 is more than 2. But if this normal person undergoes MI, तो बेटा heart muscles will burst and LDH1 will become more than 2. कहाँ पे? In the blood. तो आंसर क्या है छोटू? LDH1 more than 2 in the patient's blood. But because the arrows I have flipped, you got confused. ए आंसर मार रहे हो तुम इसके अंदर. कंफ्यूजन नहीं, सोचना है. LDH1 becomes more. इसको तो LDH flip बोलते हैं बेटा. ठीक है, the answer is A. Stain which is used for infarct area in MI. Whenever there is an MI, then what is the stain we are using? What is the stain we are using? This is a, yes. Yes, Herpara, you are right. Yeah, TPTC, very good. Triphenyl tetrazolium chloride. But there are two areas, red area and you will have a white area. On TPTC, whenever we have a red area, that means it's normal. White area means it is infarct. Why we get red area? We are getting red area because here the LDH is present. And when the LDH will be not seen, the area will become whitish because the stain will not go. Earliest to rise after MI. Which enzyme is gonna rise the earliest after the MI? This is HFAP. You know, hard fatty acid binding protein. ठीक है, तो ये सबसे पहले MI के बाद आएगा. Now these are your, you know, vegetations which you are seeing on the heart valve. तो बेटा ये A है, ये B है, ये C है और ये D. अब बताओ छोटू लोग फटाफट, what is A? Tell me what is A? बेटा मायोग्लोबिन नहीं आता. HFAP अगर दिया है तो HFAP will be a better answer and then you go with myoglobin. ठीक है, इसका आंसर बोलो फर्स्ट वाले का. यू आर सीइंग दिस ग्रोथ. हाँ, ये स्मॉल स्मॉल सा ये ग्रोथ, ये टोटल ऐसे 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 ग्रोथ जा रही है वन साइड ऑफ द वॉल. Whenever, yes, you are right. If you are getting one side wall, this is your rheumatic carditis. Rheumatic carditis. One, you know, along the line of closure, continuous growth रहता है, छोटा छोटा रहता है. This is rheumatic carditis. Pancarditis है ये. Most important या most characteristic feature is ash of bodies. Rheumatic carditis के लिए. And for diagnosis of rheumatic carditis, history of throat infection is mandatory. ये क्या है? B. अच्छा, तुम ऑलरेडी देने लगे हो आंसर. दिस इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. वेरी गुड. यस, ये क्या है बेटा? दिस इज योर NBTE, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोएंडोकार्डाइटिस. व्हेन यू आर हैविंग वन साइड अ लिटिल, यू नो, मीडियम साइज वेजिटेशंस. और जब दोनों साइड होता है, whenever you have vegetations on both the sides, जैसे कि इसमें D में दिख रहा है, this is your SLE. This is your SLE. बेटा हिमैच से ना घबराना नहीं है. आप अब जैसे आज आपको ल्यूकीमिया के बारे में बोला मैंने दोबारा यहाँ पे, सो इफ विद दिस यू गो एंड ट्राई टू सॉल्व द ल्यूकीमिया क्वेश्चन. जो रटने वाली चीज़ है बेटा, उसको तो रटना पड़ेगा ना. मतलब उसको अपन, कोई और तरीका नहीं उसको याद करने का. In the classes, while during the classes, we have been discussing the ways कि इसको ऐसे याद कर लो, इसको ऐसे याद कर लो with the story form. But जो चीज़ समझ के जो रटना ही है उसको रटना पड़ेगा. But understanding अगर है तो क्वेश्चन हो जाएगा. Generally what I have seen, हिमैट के क्वेश्चन से लोग घबराते इसलिए हैं because थोड़े से बड़े होते हैं, तो सोचना ज़्यादा है तो घबरा गए. पेशेंस रखो यार, हो जाएगा वो. A chronic alcoholic with complaints of nausea, vomiting, yellowing of skin came to the OPD. He is also a known case of hepatitis B. Which of the following from the given options proves that he is suffering from chronic Hep B? किससे पता चलेगा छोटू, बताओ कि इसको chronic Hep B है?
Very good, Altaf. I'm so happy. C is the answer. Ground glass hepatocytes. Beta, HbSAg positivity doesn't differentiate chronic and acute until and unless you are given the time period. If they are saying HbSAg positive for more than 6 months, then it is obviously chronic hepatitis. But just HbSAg positive, it means hepatitis B is there, but acute chronic में से अपन decide नहीं कर सकते. Core antibody positivity also, until and unless I do not know which type of antibody, whether it is IgM or IgG, I cannot comment whether it is acute and chronic. But if I am getting a ground glass hepatocyte, then this is 100% chronic hepatitis B, because ground glass hepatocytes, they are the findings of chronic hepatitis B. This is your exam question, recent exam question. High titers of HBV DNA, acute में भी हो सकता है यार. HBV DNA का high titer मतलब virus is multiplying, so it can multiply in acute also. ठीक है? Yes. चलो ये आप सबको आता होगा, अपन फटाफट कर लेते हैं इसको. Whenever you are having a surface antigen positive, envelope antigen positive, and the core antibody is IgM. So when the core antibody is IgM, what we have discussed, बताओ फटाफट ये वाला बताओ. When the core antibody is IgM, तो क्या होगा? If a core antibody is IgM, it needs to be, very good, acute. And because surface antigen is positive, so obviously it is hepatitis B, and the envelope antigen is also positive. तो इसका मतलब virus is multiplying. So this is acute active Hep B, or you can just write acute Hep B. ठीक है? Then second, बेटा second में क्या है? Surface antigen positive नहीं है, surface antibody भी नहीं है, envelope antigen नहीं है, envelope antibody नहीं है, only and only core antibody is there. Can you please tell me what is core antibody? Only core antibody seen. Only and only core antibody. फटाफट बताओ बेटा. Yes, you are right. It's a window period. It's a window period. Then third, HbSAg positive. तो मतलब hepatitis B तो हो गया. Envelope antigen positive. Envelope antigen is a marker of replication. So इसका मतलब active है. But core is IgG. So whenever core is IgG, this is chronic. Because envelope antigen is there, so it is active. Virus is multiplying, and surface antigen is there, it is hepatitis B. तीन ही एंटीजन होते हैं बेटा. कोर तो अपने को दिखता नहीं है. एनवेलप का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड सरफेस का मतलब पॉजिटिविटी फॉर हेपेटाइटिस बी. तो उसी हिसाब से हमने मार्क किए. फोर्थ बताओ. टेल मी द फोर्थ. सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मतलब हेपेटाइटिस बी है. एनवेलप एंटीबॉडी पॉजिटिव मतलब इनएक्टिव है, वायरस इज नॉट मल्टीप्लाइंग. एंड कोर एंटीबॉडीज IgG, इसका मतलब इट्स क्रॉनिक inactive Hep B. Fifth, beta, you are only and only having surface antibody. When do you have only surface antibody in the patient? Only surface. When you have given a vaccine. So it's a vaccinated individual. And when I have surface antibody and core antibody both, इसका मतलब क्या होता है? Finally, जो अपने को चाहिए. What do you want? We want to cure the patient. So this is a cured patient, or we can say recovered patient. ठीक है? Very good, छोटू लोग. Very good. प्रीति, समीर, नजर, विभूति, भरत, बाबू. Nice. Fibrosis in liver is done by which cells? ठीक है बेटा, तो ये liver है. अगर यहाँ liver होता तो alcohol आंसर हो जाता. But fibrosis in liver is done by which cell? Please tell. Yes, it is done by stellate cells or ETO cells. ठीक है. Then ATP7B gene. When I am talking about ATP7B gene, what is the disease we are talking about here? ATP7B gene बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों डिजीजेज इनको पढ़ के जाना एग्जाम में. इट इज योर विल्सन्स डिजीज. एंड HFE gene,
beta, this is for your hemochromatosis. Wilson is with the copper, high copper, and hemochromatosis is high iron. ठीक है? So I hope you would know that exactly which organ where is getting involved. Please remember that. Second last question, a 67-year-old male, known diabetic from past 7 years, presented with blurring of vision. Urine examination showed, देखो अब आप लास्ट 2 लाइन पढ़ोगे तो भी उससे काम होता है. Diagnosis of diabetic retinopathy is made. Most common microscopic finding associated with diabetic nephropathy is. Most common microscopic finding associated with diabetic nephropathy. इसमें इसने क्या बताया, यूरिन एग्जामिनेशन में प्रोटीनूरिया है, GFR इज 55 ml पर मिनट, मतलब CKD में गया हुआ है ये स्टेज 3 में. फंडस एग्जामिनेशन शो डॉट एंड ब्लॉट हेमोरेजेस, माइक्रो एनेरिज्म एंड कॉटन वूल स्पॉट्स. तो मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो रही है एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो रही है. सो व्हाट इज द आंसर? बेटा फिर दोबारा आप गलती कर रहे हो. These are very common mistakes you are making. बेटा ये पूछ रहे हैं most common microscopic finding. With diabetic nephropathy, we are having 3: most common, most characteristic, and earliest. तो छोटू, when we are talking about most common में था बेटा diffuse glomerulosclerosis. Diffuse. Most characteristic, you are right, it is Chemistine-Wilson lesion or nodular glomerulosclerosis. Whereas earliest, it is basement membrane thickening. These are the findings. यहाँ पे most characteristic नहीं, most common पूछा है. And I knew that you people would make a mistake because अभी कैसे है ना बेटा, अभी दर्द हो रहा है सिर में, हो गया टाइम, बहुत देर से आप मेहनत कर रहे हो, तो जल्दबाजी करते बेटा. एग्जाम में भी यही होगा. Exam में you would have to sit for 150 minutes for those 150 questions over there. And towards the end of it, your mind will play games. Do not rush. Do not try to finish it. This is most common. मैंने first दिया ही option ये इसलिए था because you would make a mistake. नहीं करनी है अपने को ये mistake बेटा, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक आए हैं. If you know to answer Chemistine-Wilson, that means you have studied it. And if you have studied it, how can you make this mistake? It's a silly mistake. मेहनत में कमी नहीं है, but silly mistake है. वो नहीं करना है बेटा. Answer is diffuse glomerulosclerosis. Okay? Yes. चलो. ये बेटा फटाफट मैं आपने याद किया हुआ होगा. Starry sky appearance. This is seen with PSGN. ये हम glomerulonephritis की बात कर रहे हैं. Only in glomerulonephritis. ठीक है? PSGN. Spike dome. When we are talking about spike dome, it is our membranous glomerulonephritis, MGN. Spike dome, membranous glomerular. Tram track, duplication. This is your MPGN, membranoproliferative glomerulonephritis. Crescents किसमें मिलते हैं बेटा? Crescents are seen with RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis. ठीक है? और एक बात याद रखना बेटा, podocytes are not a part of crescent. ठीक है? They are not a part of crescent. Then HIV associated glomerulonephritis. Whenever HIV word is given with a glomerulonephritis, majority of times it is your focal segmental glomerulosclerosis, FSGS. Very good beta. FSGS. Then loss of foot process of podocytes. Loss of foot process of podocyte, this is your minimal change disease. Most common cause of nephrotic syndrome in a child. Lymphoid nephrosis is the other name. Steroid responsive glomerulonephritis it is. Chemistine-Wilson lesion, abhi अपन ने पढ़ा बेटा, this is seen with diabetic nephropathy. The other name is nodular glomerulosclerosis. Most common cause of recurrent hematuria. देखो बेटा इसमें ना, what you have to remember, overall if they are asking, the answer is IgA. Then comes PSGN. But as we had discussed multiple times, you have to see two things: the complement levels and the history of throat infection. If the complement level is decreasing,
PSGN में होगा वो. एंड थ्रोट इन्फेक्शन का जो हिस्ट्री होगा ना बेटा, थ्रोट इन्फेक्शन, इफ इट इज 7 to 10 days ओल्ड देन इट इज PSGN. बट अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन्ड है देन यू गो विद IgA, और it is mentioned that the complement levels are normal and throat infection is like 2 days old, 3 days old, तो acute case है then it is IgA, otherwise it is PSGN. RBC cast, when we are talking about an RBC cast, but this is seen in nephritic syndrome. Nephritic. And WBC cast, it is generally seen with pyelonephritis. PN, pyelonephritis. ठीक है? Yes, Alan, Madhumita, Pradoy, Devshil, you people are right. But remember this, हाँ? इसको ध्यान रखना है. चलो, ये बेटा मैंने already I have explained you. Now let's do the last question for the session. A 3-year-old boy came with his parents to the OPD with history of multiple bleeding episodes. ध्यान से करना बेटा इस question को. On further evaluation, it is noted that patient's platelet count is normal. Normal platelet count. On performing coagulation studies, PT came out to be normal, but APTT was raised. So prothrombin time is normal, but activated partial thromboplastin time is raised. Out of the following given factors, whose deficiency confirms the defect in APTT? So once you read this question, the options are 10, 2, 9 and 5. Now, once you read this question, you do understand that, they are talking about multiple bleeding episodes. Now, these multiple bleeding, whenever we are having a bleeding episode problem, we think about two things. Either it's a platelet problem or a coagulation problem. Now, they have mentioned already for your, ease that the platelets are fine, man. The number of the platelet is not a problem. And they are telling you that PT and APTT, they are coagulation studies. The test to find your coagulation pathway working. So they are saying PT is normal, APTT is raised. What is the answer for this question? Yes, very good guys, very good. देखो, अब इसमें आप देखो, ये question का answer 9 है. It is C. I'll just explain you in a second and then we are done for the session. देखो, whenever we are talking about a coagulation, why the coagulation factors, this is what we study in the class also, कि we have an intrinsic pathway and an extrinsic pathway. तो बेटा इसको ना याद करना बहुत आसान है. देखो, intrinsic and extrinsic, they are occurring due to different kind of injuries. If it's an internal injury to the vessel, intrinsic pathway will try to make the fibrin for you and try to make a clot. If it's an external injury like surgery, burn, trauma, something, then the extrinsic pathway works. Both these pathways, they work individually. It's not that if you want a clot, you need to have both these pathways. नहीं, individually काम करते हैं, and they come on a common pathway. So देखो, ये जो है ना common pathway बहुत easy है याद करना. It is 10, half of 10 is 5, then half of 5 is 2, मतलब 2.5, so you can take it 2 and उसका half 1. So common pathway तो बेटा 10, 5, 2, 1 हो गया. Intrinsic pathway starts with the activation of 12, उसके बाद 11, 11 के बाद 9 और 9 को 8 चाहिए होता है. So 12, 11, 9, 8. 12, 11, 9 and 8, 10, 5, 2, 1. This is your intrinsic pathway, a longer pathway. So 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, 1. And when we are talking about an extrinsic pathway, then it is only one step. Activation of factor number 7. So 3 plus 4. ये वाले फैक्टर्स यहाँ पे जरूरत होती है इनकी. तो 3 plus 4 is 7. तो आप ऐसे याद करो 3, 4, 7. कॉमन पाथवे सेम है 10, 5, 2, 1. अब छोटा कौन सा है पाथवे? एक्सट्रिंसिक प्लस कॉमन. बड़ा कौन सा है? इंट्रिंसिक प्लस कॉमन. सो टू मेजर दिस वी आर डूइंग एक्सट्रिंसिक प्लस कॉमन. इसके लिए हम करते हैं बेटा पीटी. फॉर अ स्मॉलर coagulation cascade, we are having a smaller test, prothrombin time. And for a bigger coagulation cascade, we are having a bigger test, that is our APTT. अब उसने क्या बोला आपको? What the person is saying in the question, that PT was normal. तो बेटा देखो ये कॉमन है, PT नॉर्मल है, मतलब यहां पे कोई इशू नहीं है और यहां पे भी कोई इशू नहीं है. Because if there would be any issue, any deficiency of any of these factors, तो बेटा PT भी तो ज्यादा आता. But the examiner said PT is normal. So examiner is saying that 3, 4, 7, 10, 5, 2 and 1, they are normal. Then only your PT can be normal. And APTT is high.
So that means there is a problem only in these. Now out of these, which one is given over there? Intrinsic के factors कौन कौन से हैं बेटा? 12, 11, 9 and 8. Which is given? 9. So correct answer is 9. Simple. Okay. So the correct answer is 9. This is how you solve this question. Remember one more thing for your exam, that we are having 13 factors, right? Factor number 13, beta, it is given to the fibrin, your activated factor number 1, to make it as a stable clot. Now this 13th number factor, no, it is never studied with PT or APTT. Coagulation studies के साथ study नहीं होती उसकी. You are reading this factor number 13, you analyze this by doing a urea solubility test. It is never measured by PT or APTT. ठीक है, तो 13 के लिए बेटा यूरा, ठीक है, this is your urea solubility test which you do with factor number 13. ठीक है, अब सीन ये बेटा कि this is it. People who wants to leave, they can. These are the 25 questions. Why I made these questions like this? Because beta, there's a trend every time which, you know, goes and comes. Sometimes the questions are very simple single liners, and this last time, like people, they came, the questions were there from the topics taught in the classes, but still the overall general perception was that समझ में नहीं आ रहा था. And the reason was because the lines were written in a different way. So it was a simple, you know, from my side, it was, I tried from my side, an effort which I did to give you simple questions. They were very simple questions, but the language was different. And whenever, you know, whatever kinds of questions, you know, I get on my WhatsApp, or I see student asking here and there, I try to take all those concepts also here, so that, you know, it becomes easier for you to solve things in the exam. I hope these 25 questions would help you. There are two more things I want to say to you people. This first thing which I want, thank you, thank you to you people for being here. I just am doing my duty to be here and to, you know, because we at MIST, we are always committed to help, you know, all the FMGs around the globe. So I'm representing MIST at this point, and I'm doing my duty. But for you people, and nobody is asking you to sit and, you know, do this session, but still you people are staying here and doing it. That shows your gist. Now, this is a free mock test which we are having for people who are not enrolled in MIST. So for those people also, we are having a free mock test. For that, this is the link which you can scan and directly register for this mock test. This mock test will be done on 5th of January. The timings are from 9 a.m. to 4:30, exactly like your exam timings. And note, this is not for people who are already enrolled with MIST. People who are enrolled with MIST, you're not supposed to register on this. Anybody who is not enrolled with MIST, only you people are advised to register. One more thing before leaving you guys, which I really want to say. देखो बेटा, ये जो है ना, ये just read it for yourself. There are two things which I want to say. Don't expect people to understand your grind when God didn't give them your vision. You only look crazy until it works, and then you become genius. There are so many messages which we are getting as faculties, which I am getting rather, that, sir, what would, you know, my friends are not understanding, or my relatives are not understanding. I am in so much of tension. They are thinking that if I won't pass, what will happen? Dekho beta, aapki mehnat, why are you sacrificing so much? Why are you not able to give time to people around? And why you are in so much of tension? There might be many people who are just giving you things, who must be saying things to you कि तुम नाटक कर रहे हो. कोई बात नहीं बेटा, उनको बोलने दो. जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर होगा ना बेटा, और आप निकल के आओगे इससे बाहर, और फिर सबको पता चलेगा कि चलो इतना रिजल्ट आया, उसमें ये बच्चा पास हो गया, बेटा सलाम ठोकेंगे आपको वही लोग. बिकॉज आपको ही पता है आपकी प्रॉब्लम्स. यू ओनली नो दैट फ्रॉम वेयर यू पीपल आर कमिंग. आज आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या, इतनी सी बात, इजी क्वेश्चन. इमेजिन योरसेल्फ जस्ट 5 months बिफोर फ्रॉम हियर, सिर्फ 5 महीने पहले. बेटा आज तो आप बोल देते हो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ है, तब तो ये भी पता नहीं चलता था. बेटा दिल से पूछना आपने, ठीक है ना.
I'm not saying everyone was like this, but still, there were times when we were not even able to understand कि ये question आया कौन से subject से है, ये तो छोड़ो topic क्या है. So it's okay. You people have done a lot of hard work and nobody is, entitled to say anything to you people because you are fighting your own fight. So आप है ना ये कोशिश ही मत करो कि आपको समझाना है पब्लिक को कि आप किस चीज को फाइट कर रहे हो. आप बस अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो एंड जस्ट कीप डूइंग इट. बिकॉज ये लोग जो आपको आज डाउट कर रहे हैं बेटा, मैं आई एम टेलिंग यू एंड मार्क माई वर्ड्स, दे आर गोना सैल्यूट यू. They're going to come and they're going to salute you. So never underestimate yourself and ठीक है, just make sure that you're working really very hard. And this last thing before I go, देखो tough है, मैं समझता हूँ, ठीक है, it's really very tough. Last 30 days for the exam, obviously it is tough, but us, we're going to sit together and one day we're going to say, मुश्किल तो था बट अपन ने कर लिया. ठीक है, ये लास्ट के बेटा 30 डेज हैं, इसके अंदर जान लगा दो अपनी. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग यू कैन टू डू द बेस्ट पॉसिबल daily output things for yourself. You should be the best version of yourself for the next 30 days. Do not try to do things extra. No need of reading everything. You know what has been taught to you. Just revise that properly and make sure whatever you are following doesn't matter because you might have done something from somewhere and something from somewhere. It's okay. But whatever you have read, just stick to that and revise it properly. Do the previous year topics if they're available. You go and see them and that's it. These 25 most important questions, we would request you from MIST side at least last 3 to 4 times of 25 most important. You must see them because they're very important. All the important clinical topics and the questions and exam oriented topics you will get from them. So we really believe that you people can do it, and I from the deepest corner of my heart I want to thank all of you the people who were sitting here and continuously answering me. Thank you very much for finding out time and being here, and you kept trying. It's not that you gave all the right answers, but you kept trying, and that is going to be your winning on the day of examination. Okay, and before going, our best wishes from the entire team MIST. You people are working hard, and believe us that everyone at MIST, we always behind the scenes, they are working really very hard to make things comfortable for you people. Thank you for giving such a good response, and thank you for being with us from the entire team MIST to every FMG who's going to appear on 20th of January. We wish you good luck. Thank you. Take care. Bye-bye.